Oh, I'm live. Hey, hello, what's up? This is Ipke Malik, and today I'm gonna be live for a while. We're gonna react to stuff, we're gonna talk about different things. Maybe we'll just watch some stuff, plan some stuff, and just be like, well, आज को नहीं हो पाएगा, and then check out maybe. This flag looks cool, by the way, no? By the way, this is my new chair. पिछले वाला chair फट गया था. It's right there. It's exactly the same chair, by the way. I bought like a quite a few stuff this year. I'm also trying to get a new audio interface. Just I hope somebody like gives me a good idea which audio interface I can buy. I have this audio interface called RME Babyface Pro, which is like a fucking hard audio interface. Like hard, matlab sorry, that sounded bad. So it means like it takes a lot of time and a lot of like weird shit you have to do in your Mac to like get your audio interface to be running basically, right? And that's not good for me. Wait, how loud I am? Let me check. Because there is no stream till date I did that either जो ऑडियो पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ या तो वो वाला लो साउंड पे है नहीं तो मेरा वॉइस लो साउंड पे है एंड इट्स जस्ट fucking frustrating, bro. Wait, Devki run. Wait, just wait. Is it echoing? The sound is pretty fucking low. Oh shit. Wait, am I louder? Am I more audible or am I less audible? What the fuck is going on? Because I hope I'm more audible. I fuck. Wait, wait. Let me check. I should be. Wait. Okay. I think I'm okay for now. Okay. No, I'm not okay. Wait, should I boost it a little bit? Take it to 2.0? Maybe? Okay, let's check. I don't know, fuck, whatever it is. Am I echoing a little bit? Or like. Wait, am I echoing? Because whenever I start watching anything, it's fucking. Yeah, bro. I'm watching a video, right? And it's. Wait, why am I logged out of my own fucking account? I'm. Damn! Shut up! Okay. Okay, let's watch this. Also, I'll watch one more channel today. That is. Oh, I'm not sharing my screen. Am I? Fuck, I'm a retard. Fuck me. I was not sharing my screen and I was doing like shit. Wait. Ragini took it too far. Copyright strike. Who is that? Who is this by the way? Raj Ratan?
And why did she give him? Who cares? Okay, stop. Okay, ये लोग copyright नहीं ना मारेगा? I don't know. I'm kind of afraid actually. I think ये लोग नहीं मारेगा. Also मारेगा तो मारेगा बेंचो. अच्छा कंटेंट बनाता है बंदा. ठीक है. Okay. What I was gonna say is I was checking out this new channel called just something like this. It's not this. Bro, did I not subscribe? Oh, no. Okay, yeah. This one. This one is a channel made by Indian Muslims and perspective of Indian Muslims on different things in India. It's mostly like liberal-ish stuff. There are some progressive-ish ideas in there too. Some ideas it's like okay-ish kinda. Like some ideas are like good, some ideas not that much good. Okay. We'll watch some content from this channel. Let's go from popular. I'll watch this Raju Parulekar thing. I think this is the full clip. Full interview. Wait, how many interviews did Raju Parulekar did with them? Damn. Damn, bro. Okay, I'll watch this too, okay? Being a brand. Also, I'll watch this today. This lady is kind of. Listen, I love like anti-Modi activism or anti-authority activism, but Jesus fuck me, man. Okay, so I'll start watching from this. First Jharkhand protest, okay, 8 days ago. Second, I'll watch the second Jharkhand protest, and then I'll watch these two videos, okay? So, सबसे पहले Jharkhand protest. What is happening in the Jharkhand protest? Let's watch it. मंतर ने एक और ऐतिहासिक संघर्ष देखा, जेनजी के आक्रोश को सोशल मीडिया। जुलाई के महीने में दिल्ली के जंतर मंतर ने एक और ऐतिहासिक संघर्ष देखा, जेनजी के आक्रोश को सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया ने खूब कवर किया। अंत में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान मोदी मंत्रिमंडल के पहले कैबिनेट मंत्री बने 12 सालों में, जिन्होंने पब्लिक प्रेशर के चलते इस्तीफा दिया। लेकिन उसी समय देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आंदोलन चल रहे थे, जिन्हें सोशल मीडिया कवर ना कर पाई और ना मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर करने की इच्छा दिखाई। रांची में जेपीएससी एग्जाम में इरेगुलरिटीज के खिलाफ JPSC and JSSC examination intensifies. Irregularities in JPSC and JSSC examination intensify in Ranchi. Okay. Fuck. Wait, let's check wiki में कुछ है कि नहीं. अगर wiki में रहेगा तो अपने notes नहीं बनाना पड़ेगा. Who knows? Jharkhand student protest 2026 wiki. Is there any? The Jharkhand student protest is a statewide student movement held in Jharkhand during the year 2026, which started over alleged irregularities in the recruitment examinations of Jharkhand Public Civil Service. Jharkhand Public Service Commission (JPSC) and Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC)
transparency in the examination management and the recruitment process. The candidates in the movement demand a fair investigation of the controversial examinations, action against the culprit, and ensuring a transparent recruitment process. The protests were held mainly in various parts of state, including Ranchi, which included events like dharna, demonstration, padayatra means like walking on foot, and indefinite hunger strike. The movement also received support from various student orgs, social organization, and many political leaders. Okay, so these are the like citations of who are supporting the students, I guess. Oh, what is the citation is for? Let's see. Let's check the citations. Srivastava Vijay Singh. Is it the names of the people who like? Wait, I'm using wiki for the fucking first time, I guess. No, I'm not. I'm not. That was a joke, by the way. Okay, so it is the citation for this initial paragraph. Okay, chronology. July 29th, 2026. Candidates began a sit-in at Ranchi's Jaipal Singh Munda Stadium to protest alleged irregularities in JPSC exam. 2nd August 2026, students, leader and current Jharkhand Loknetrik Krantikari Morcha JLKM leader Devendra Nath Mahato began a indefinite hunger strike to support the protesters. August 5th, 2026. On the 12th day of the agitation, students announced a Tiranga march and a Ghera of Jharkhand Assembly on August 10th. Okay. The monsoon season of Jharkhand Assembly began amid opposition protests, student agitation over JPSC JSSC examination, recruitment exam, controversy. Police detained 19 people during the demonstration. August 7th, 2026, the agitation entered its 14th day. The students' hunger strike continued. A 11-member delegation prepared for talks with the government, and the movement also received political support. Jharkhand protesters from 11-member panel for talks with government over recruitment exam row. Okay. Ranchi's Jantar Mantar movement students protest enters a new phase with CJP backing. Okay. So basically, they were helped by CJP. I think there were some BJP fundings too because like it was against the Congress or whatever. But whatever. Like if it is for the students and for the betterment of the educational system in India, I don't care who fucking funds. Okay. Even if fucking Pakistan funds or China funds, send directly to the accounts of the people who are protesting. Okay, damn, bro. At this point, any funding is welcome. August 10, 2026. Protesters began the Bidhan Sabha Gherao March to the Jharkhand Legislative Assembly. Legislative Assembly. So Jharkhand Legislative Assembly is basically like the Bidhan Sabha, I think, right? Bidhan Sabha and Bidhan Parishad. That two taken together is the Jharkhand Legislative Assembly, right? With Devendranath Mahato joining them in an ambulance. The Jharkhand police used lathi charge, tear gas, and water cannons to disperse the protesters. Mahato was admitted to Sardar Hospital, Ranchi, after the march due to deteriorating health. Jharkhand CID meanwhile arrested JPSC chairperson L. Khingate over alleged irregularities in the recruitment examination. Okay. August 11, 2026, Bharatiya Janata Party Jharkhand enforced a statewide ban in protest against alleged police atrocities. Okay. BJP enforcing a ban over student atrocities. Sorry, police atrocities. Damn, that's just Kino stuff. But hey, as long as it's going for a good cause, I support anybody that's helping us. Okay. During the march on 10th August,
More than 200 members of Akhil ABVP basically were detained by the police during the attempted march towards Jharkhand Legislative Assembly to protest the lathi charge against students. A clash was triggered between the group and the police after some ABVP workers tried to stop a van carrying detained members. Okay, I'm sorry. These are, you shouldn't do these things, okay? But again, like ABVP, although supporting a good cause at this point of time, but like they are like agitators. End of the day, they are agitators. So yeah, even if you think that like they helping you at this point of time might be good for the general cause, do not be fooled and like take them as your allies basically, right? If you care about the education system, if you care about political power, go fucking ahead. Demands. The protesting students and candidates placed several demands before the Jharkhand government. These included cancelling the 14th JPSC preliminary examination. Why cancel? Okay. Conducting a CBI or judicial inquiry into alleged irregularities and question paper leaks in the recruitment examination, ensuring transparency and accountability in the JPSC and JSSC recruitment processes, and adopting a fair and timely process for future recruitment examinations. The protesters also demanded that the action must be taken against those allegedly protesters also demanded be action be taken against those allegedly involved in the recruitment process and that the interests of eligible candidates be protected. Okay. The protesters also demanded that the action be taken against those allegedly involved in the okay, जो लोग स्कैम करने के लिए मदद किया उन लोग के लिए ऊपर एक्शन लेना चाहिए. Bro, my mouse is fucked. The government response. In response to the students' movement, the Jharkhand government initiated talks with representatives of the protesting students. An 11-member delegation was formed to negotiate between the government and the protesters. During the meeting, the state government pledged to consider complaints related to recruitment examinations and seek solution through dialogue. Meanwhile, protection was tightened in Ranchi during the protest, and additional police forces were deployed in anticipation of protests during monsoon session of JLA, Jharkhand Legislative Assembly. The Jharkhand police used lathi charge, tear gas, water cannon against protesters on 10th August during their march to the Jharkhand Legislative Assembly. The Jharkhand police stated that some of the protesters had turned violent, attempting to break through barricades and engaging in stone pelting. So basically, ABVP was involved. So kuch to heckling hoga, kuch to like political agitation hoga, which is expected from ABVP. But as long as they are on the side of the students and for the betterment of the education system, hey, they're welcome, okay? Like, unironically, although I favor Mamata Banerjee right now, I always talk shit about Mamata Banerjee when she was in power, basically, right? Because I knew that as long as, like, this is, I'm stealing somebody else's code, I don't remember whose code this is, like, BJP works as a really good opposition, and Congress works as a good enough, like, party in power, basically, right? When Congress or the opposition party stays in power, they generally works as a good GOP, and BJP works really good, like is a like 5-star rated like opposition party, basically. That's why you should always keep them in the opposition. But fucking hell, we are India, so they will be in the power, and people who cannot oppose will be in the opposition. Damn. Various political parties and leaders, oh my god, various political parties and leaders expressed their reactions to the protests. Opposition party demanded an impartial investigation into alleged irregularities in the recruitment exams and consideration of candidates' demands. Several leaders met with the protesting students and expressed their support. Meanwhile, the state government advocated for a solution through dialogue and appeal to the students for talk. I don't want to make the question like argument that उस गवर्नमेंट को देखो
वो लोग तो बात भी नहीं कर रहा था, वो लोग तो डायरेक्ट लाठी चार्ज करके हटा दिया. ये लोग तो एटलीस्ट लाइक टॉक्स करने के लिए रेडी है. आई डोंट लाइक डीप डाउन इट फकिंग like shakes me to the core to make like that kind of argument. Like this is the bare minimum from the government कि जब लोगों का कुछ आक्रोश हो, कुछ पब्लिक फ्रस्ट्रेशन हो, जिसके लिए वो लोग आगे आके आपके सामने कुछ मांगे रख रहे हैं, वहाँ पर आपको बात करना एक bare minimum, right? But end of the day, still we can see like this government this soon like agreed for talks, whereas like BJP till like 20 days they were like, who fucking cares, let this motherfucker die. And suddenly when they were like, we'll march to the parliament, they were like, fucking lathi charge karo, fucking, oh my god, there was some insane shit right there, right? And I missed it. Okay, I was supposed to go on 20th on Delhi. Listen, my team is not funding me to go to this protest to record anything. Well, to be very honest, whatever I recorded in the Delhi protest, I did not upload anything in this channel basically. So, yeah, it's unfair for me to talk much about it in this channel, right? Impact. As a result of the movement, the issue of transparency and fairness of recruitment examination in Jharkhand becomes a major topic of statewide political and public discourse. This controversy also led to the issue of alleged irregularities in the recruitment examination being raised prominently in the monsoon session of Jharkhand Legislative Assembly. During the movement, a dialogue process began between the state government and the protesting students, and the students formed an 11-member delegation to negotiate with the government. The movement also sparked widespread discussion about state's recruitment examination system, exam management, and the need for reforms. Reaction. The movement received support from various student organizations, social activists, and political leaders. Congress President Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi expressed concern over alleged irreg- irregularities in the recruitment exam and stressed the need to address students' demands and reform the education and recruitment systems. Meanwhile, the state government vowed to continue dialogue with the students. Okay. So the basic points were that they started in when did they start? 29th July. The main guy was Devendranath Mahato. There was a 11 member student body that was talking with the government. They marched on 10th August 2026 and got like lathi charge, and 11th August 2026 mein basically BJP ABPP members are like shit staring basically, right? Damn. Subsequent events. 10th August 2026. On 10th August 2026, protesters marched towards Jharkhand Legislative Assembly. Police used, we know that, water cannons and lathi charges, batons to disperse the protesters after they broke through police barricades. Meanwhile, the Jharkhand CID arrested El Khainte, former chairman of Jharkhand Public Service Commission, in connection with alleged irregularities in recruitment examinations. On the same day, the government agreed to cancel 3 examinations and 3 members of the JPSC. Wait, what? Also cancel the 3 examinations and 3 members of the JPSC resigned. So basically, 3 member resign कर दिया और 3 exam भी cancel हो गया, right? Okay. 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 Let's watch it, okay? ने मोर्चा खोल दिया। एमपी में नदी के किनारे आदिवासी महिलाएं जल सत्याग्रह कर रही थी। भोपाल में हजारों किसान अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मुख्यमंत्री के आवास की तरफ कूच कर रहे थे। देहरादून में लोग साल के पेड़ को गले लगाकर खड़े थे ताकि Well, I understand like we have to do the fast editing of everything. I think like when you talk about different protests,
again, this is not, I'm not necessarily giving advice to Deshbhakt or something like that. I'm generally like making a general point. Like if we are talking about like these as like snippets, I think we should give like 30 seconds or more to each topic at least, to give like the TLDR of like this topics a little bit more, maybe, I don't know. It's my opinion, okay? Take it however you want, okay? उनके जंगल बच जाएं। पंजाब में सैनिटेशन वर्कर्स के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था और असम में काजीरंगा के पास 5 स्टार होटल बनाने के विरोध कर रहे एक्टिविस्ट पर एनएसए लगाया जा रहा था। और ये सिर्फ मैं कुछ नए प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं जो पिछले महीने हमारे सामने आए। भूलिए मत कि हमारे देश में वैसे में ही नौकरी, पानी, बिजली, जमीन मुआवजा, एमएसपी को लेकर विरोध प्रदर्शन होते आए हैं। लेकिन सरकार ने पिछले कुछ सालों में किसी भी आवाज उठाने वाले को एंटी नेशनल घोषित करने में सरकार कामयाब रही है। चाहे वो आवाज जेएनयू से आए, चाहे जंतर मंतर से आए, या फिर झुमरी तलैया से। प्रोटेस्ट करना, उसमें जाना, उसका समर्थन तक करना अनुकूल सा बन गया था। लोग भी मूर्ख बन गए। धर्म, राष्ट्रवाद के नारों के बीच में वो चुप से रह गए। लेकिन अब ये चुप्पी टूट रही है। देश की खस्ता आर्थिक हालत, पेपर लीक की बाढ़, एजुकेशन सिस्टम का टूटना, नौकरियों का सिकुड़ना, किसानों की लाचारी सबको सड़क पर ला चुकी है। और जवाब सभी से मांगे जाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जेएमएम हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। हम भूल जाते हैं कि हमारा देश प्रदर्शन और आंदोलन के आग में झुलस कर ही बना था, तभी जाकर हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। चाहे वो क्विट इंडिया हो या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, ये एंटी नेशनल नहीं हुआ करता था, यही देशभक्ति हुई करती थी। अंग्रेजी हुकूमत तो चली गई, लेकिन उनकी जगह नेतागण ने ले ली। The problem is like back then, I'm very much like vibing out this answer. I actually don't know. I actually don't know how right I am or how wrong I am. If you think I'm wrong, just talk to me about it. So my opinion is, I don't know how like back then there was a general idea that there is an outside force who is controlling us and making laws about what's gonna happen in this land from a different land, and those people are different. I don't know, it's very hard to make that argument right now, especially as long as there's like a as long as like there is a veneer of like free and fair elections, basically, right? Like we don't really have free and fair elections in India, but end of the day, like even the non free and fair part भी like ये होता है कि इस आयर में आपका नाम उड़ा दिया, या यूपी वगैरह में लाइक आप मुस्लिम कम्युनिटी से हो तो आपको लाइक थ्रेट किया गया, आपको लाइक बेसिकली लाइक पुलिस इंटिमिडेशन या हिंदुत्व ग्रुप से इंटिमिडेशन फेस करना पड़ा या समथिंग लाइक दैट. बट लाइक देयर इज स्टिल एंड ऑफ द डे सम विनियर ऑफ लाइक द हिंदू मेजॉरिटी, लाइक कास्ट को छोड़ के सब कुछ छोड़ के हिंदू मेजॉरिटी एंड मुस्लिम माइनॉरिटी एंड अदर माइनॉरिटी सब मिल के अगर एक बार हम लोग अपने आप को इंडियन बोल सकें एंड एक बार के लिए अगर सेक्युलर लिबरल वैल्यूज़ के लिए हम लोग लड़ें एंड हर इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन के लिए करने के लिए अगर हम लोग एक हो पाएँ, तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर आवर country. But I don't know how easy it is to make that argument right now, especially because we have a generally a veneer of like free and fair elections. Because oh my god, क्या किसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुम्हारी ही सरकार है, तुम ही वोट किए हो. उसके बाद there's like this weird like non-biological इंसान है हम, like this weird shit, you know what I'm saying? The whole thing I'm saying is it's a little bit harder right now to like make a us versus them narrative, especially like with a like majoritarian like what's the word, I'm getting the Bengali word tosamot, appeasement, majoritarian appeasement का government हम लोग का पास है, तो इसीलिए it's harder to make that argument. That's what I'm generally saying. Okay. 3 गुना लगान अब टैक्स के रूप में वसूला जाता है
और नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर जनरल डायर के तरह व्यवहार भी किया जाता है हमारे साथ। देश में आज जो अनेक जंतर मंतर खिल रहे हैं, ये उसी हुकूमत को नोटिस है, चेतावनी है कि चुनाव तो 5 साल में एक बार आते हैं, लेकिन उसके बाद काम करना और जनता को जवाब देना नेता की डेली जिम्मेदारी है, उसका ड्यूटी है। अरे नेता भगवान नहीं है, सर्विस टेक्नीशियन है, जिसे हम 5 साल के लिए देश या कोई राज्य चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अगर काम सही नहीं हुआ, अगर चोरी चकारी हुई, तो नौकरी जा सकती है। इसी को कहते हैं पीपल्स पावर। और ये जो आक्रोश अलग अलग राज्यों में अब हम देख रहे हैं, वो ऐसा है कि लोगों में एक्चुअली जो सब्र का बांध था ना, वो बस टूट रहा है। अब हमारे I'll actually try to like research about the Madhya Pradesh Jal Satyagraha thing a little bit. I don't know, like I don't know what are the type of content I'll like come across. इसलिए I'm just a little scared to do it on stream. और आज को I might be live for like 6-ish hours, so maybe I'll do it today. Maybe I don't know. सामने आ चुका है। क्या अब नेतागण ये बात समझ पाएंगे कि उनका पाप का घड़ा भर चुका है? कोई भी नेता, कोई भी पार्टी पावर के नशे में इतना तो धुत नहीं हो सकती है कि उसे खतरे की घंटी नहीं सुनाई देती है। सवाल यह है कि अब वो रिएक्ट कैसे करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं या उन्हें और रौंदते हैं आने वाले दिनों में। सबसे पहले रुख करते हैं झारखंड की तरफ। 29 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक धरना प्रदर्शन चल रहा था। डिमांड सिंपल लेकिन गहरी है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या जेपीएससी और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या जेएसएससी, इसके जरिए होने वाली भर्तियों में पेपर लीक और भ्रष्टाचार का आरोप काफी टाइम से लगता आया है, लेकिन इस साल तो हद ही हो गई। जेपीएससी एग्जाम में कोई कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं बताया गया, मेरिट लिस्ट पर कमीशन मेंबर्स के सिग्नेचर्स नहीं मिले, और सबसे बड़ा स्कैम तब हुआ जब एक ओएमआर शीट वायरल होने लगा इंटरनेट पर, जहां 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए थे, लेकिन उस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया गया जबकि क्वालिफाइंग स्कोर ही 144 था। इसीलिए स्टूडेंट्स ने इस सिस्टम को अब बदलने के लिए Okay, you should give a little bit more context to that. Is it like a 1 marks question or what? The controversy escalated further. Alleged OMR surfaced on social media. One of these violations purportedly belonged to a candidate from another state who had attempted around 48 questions in paper 1, a figure that would likely to yield far less than the estimated qualifying threshold of approximately 144 marks. However, the student still was declared qualified. Similar claims were later made in the backlog recruitment examination, where another candidate was alleged to have only answered only a limited number of questions, yet figured out among the successful candidates. और ही 144 था। इसीलिए स्टूडेंट्स ने इस सिस्टम को अब बदलने के लिए सड़कों पर आने का फैसला किया। जंतर मंतर में स्टूडेंट्स ने ऐतिहासिक जीत जब हासिल की, तो झारखंड में भी स्टूडेंट्स का हौसला थोड़ा बढ़ा। उन्हें लगा कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी केंद्र सरकार को झुका सकती है, तो वो कम से कम राज्य सरकार, जेएमएम सरकार के आगे अपनी बात तो रख ही सकती है। धीरे धीरे रांची में प्रोटेस्ट बढ़ने लगा। फाइनली प्रोटेस्ट के 8वें दिन स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो ने एक इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। कुछ दिन बाद उनके साथ 5 और स्टूडेंट्स भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसके बाद प्रोटेस्ट बढ़ता रह गया। Introducing Clip B. Whatever you can picture, you can generate. Want something wild like a man? हजारों बच्चे आज धूप, गर्मी, बारिश, इस सब को झेलते हुए स्टेडियम के बाहर बैठे रहे, एक बेहतर कल की आशा में। बस फिर क्या था, स्टूडेंट्स सड़कों पर आ गए और उसके बाद जो सरकार की पोल खुलने लगी, उसे कोई रोक नहीं पाया। ये आज 1 अगस्त है तो मैं यहाँ आई, तो ये मेरे चला जाएगा आज। और कल नहीं आई थी तो कल क्योंकि पे नहीं कटे रहे थे, सिर्फ 7 आवर पड़ी। हमारा प्लान भी नहीं है, हमारा प्लान भी कहाँ है, हम लोग कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है, कुछ नहीं समझता हम लोग को, कुछ नहीं। जब झारखंड की सोरेन सरकार ने देखा कि प्रोटेस्ट तो बढ़ते ही जा रहे हैं, स्टूडेंट्स थक हार के घर नहीं चले गए, अपने मोबाइल फोन में बिजी नहीं हो रहे हैं, ये बात तो नेशनल लाइमलाइट पे आ रही है, तब जाकर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने 4 तारीख को अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा नहीं, हमारी आंखें हैं, हमारे पास कान हैं, हम स्टूडेंट्स की बात। Well, okay, I understand
we are for the people and we are the people who fights against them basically, right? But listen, 29th को शुरू है 29th को शुरू हुआ था, 4th अगस्त को सरकार ने एक बयान दिया. I'm pretty sure that's good enough, okay? I understand that we have to be the people and we have to work for the people and fight for the people. But like compared to like other stuff, I mean it's good enough, okay? Come on, cut him some slack. That's what I'm saying, okay? Again, I'm not saying that like he has done the best job of or whatever, right? Like 5 दिन बाद reply किया, that's big enough, right? I'm pretty sure that's big enough. Even I think like when did Devendra Mahato join? He joined in 2nd August. And 4th August ko like the chief minister talked about this thing, no? Hemant Soren talked about this. So it's like 2 days after Devendra Nath joined. Yeah, it's good enough. Come on, cut him some slack, okay? पर अमल जरूर करेंगे, समय आने पर सारी चीजों पर अमल होगा. अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. लेकिन आप सोचिए, एक डेमोक्रेसी में क्या एक चीफ मिनिस्टर की चुप्पी तोड़ने के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट और इतना हंगर स्ट्राइक करना पड़ेगा? और मजे की बात यह है कि झारखंड सरकार कांग्रेस के समर्थन पे ही चलती है, उसके साथ ही चलती है. तो राहुल गांधी ने जो आक्रामक रूप दिखाया था दिल्ली में, अरे भैया पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के घर के सामने आ धमके थे, ये अनप्रेसिडेंटेड था. Well, okay. Are we really playing that game right now? I'm sorry. We have to end of the day like be honest with ourselves. Rahul Gandhi did not join the protest whatsoever during the whole ordeal. Rahul Gandhi only like joined the protests in the Delhi Jantar Mantar thing when the students के ऊपर इतना गंदा लाठी चार्ज हुआ, and that he was protesting against, right? And he went in front of the Prime Minister's house due to that reason. He was not like protesting random shit. Again, I'm not defending fucking Rahul Gandhi or whatever, but like end of the day, I think we should be a little bit more honest than this. I hope I can wish that from Deshbhakt. At least I can wish that from Deshbhakt, no? Like he's such an honest person. Like, come on, be a little bit more honest than that. A little bit. Can I wait? If he does this, can I sack? Okay, I don't think it's a good idea, no? Wait, sorry. लेकिन झारखंड में स्टूडेंट्स के साथ वो नहीं खड़े हो पाए. एक ट्रू एग्जांपल वो Okay. I guess we have to do the like every politician is bad thing, but come on. Let's be a little bit more honest with ourselves. A little bit more honest. Like a little bit more honest, okay? That's what I ask for from you, Deshbhakt. Yeah. कर पाते, लेकिन जहां वो सत्ता What I was saying was like Rahul Gandhi did not join the CJP or any other like thing for a reason, because he is end of the day like a mainstream political leader, and he was like scared कि हम join करने से क्या होगा, वो लोग कैसे है नहीं है, yeah, whatever, right? Which he was in his right to do so, and he only joined when there was like fucking like lathi charge on the students, and
that police atrocity is the thing that pulled Rahul Gandhi. Again, I'm not here to fucking defend Rahul Gandhi or whatever, but like, let's not do the like all politicians bad thing, okay? It's just strange, okay? हैं वहां वो खामोश रह गए। लेकिन राहुल गांधी बोले ना बोले, प्रोटेस्ट अब इतना बड़ा हो चुका है कि स्टेट सीआईडी ने जेपीएससी के डेप्यूटी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता समेत कई और लोगों को Wait. Okay. Do not misunderstand me. I'm not saying it's a like overwhelming response for the government. Oh my god, the government is so good. I'm generally saying that it's a shame that our Indian system has so many flaws, and our Indian system, education system especially, like, is so porous that like paper leaks from every fucking where. Okay, it's a shame. Of course it is, right? Sorry. Of course it's a shame. That's not what I'm talking about. What I'm talking about is like if we are like holding people accountable or whatever, like at least be a little bit more honest than this. Like the state responding is not like a good or a bad thing, because the fact that the state had to respond is not good, right? Because the fact that the student have to like waste their time and come to protest is like sad, right? But I'm not really like of the idea, like I don't really like the idea that I don't really like the idea that like yeah, there's some weird hypocrisy that the student like that happened in case of Rahul Gandhi or something like that. That's the thing I don't agree with this वक्त. किया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि 20-25 लाख में एक एक सीट बेची जा रही थी। इन खुलासों, इन प्रेशर जब बढ़ गया तो फाइनली इस हफ्ते जेपीएससी चेयरमैन को भी रिजाइन करना पड़ा और मेंस एग्जाम भी पोस्टपोन करना पड़ा। पर स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम पोस्टपोनमेंट की बात अब नहीं कर रहे हैं, बात उससे आगे जा चुकी है। जेपीएससी और जेएसएससी की गड़बड़ियों का सीधा इन्वेस्टिगेशन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अब सीबीआई को करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर भरोसा ही नहीं है। नंबर 2, 14th जेपीएससी प्रीलिम्स तुरंत कैंसिल हो और फ्रेश एग्जाम्स का अनाउंसमेंट किया जाए फटाफट। नंबर 3, रिक्रूटमेंट में 100% ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और सालों का जो डिले है वो खत्म किया जाए। नंबर 4, रिक्रूटमेंट एजेंसीज में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए जाए ताकि एस्पिरेंट्स का जो भरोसा है सिस्टम पर वो वापस आए। साफ तौर पर बच्चों का जो भरोसा है पूरे सिस्टम पर, नेताओं पर, वो चुरमुरा रहा है। नेतागण ये बात समझे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। देश में आज शायद कोई ही तबका होगा जो मुश्किलों में नहीं है। स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास, लेबर क्लास, फार्मर, आदिवासी, सब के बुरे दिन चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पिछले महीने बराना नदी के किनारे कोपी गांव के पास आदिवासी किसान और महिलाओं ने एक आंदोलन शुरू किया। मुद्दा था केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जो देश का पहला रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट है, जिसमें केन नदी का पानी बेतवा नदी में ट्रांसफर करने का पूरा प्लान है। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन ने एक काफी दिलचस्प रूप ले लिया। प्रोटेस्टर्स ने यहां कई तरीकों से सिंबॉलिक सत्याग्रह किया। जल सत्याग्रह यानी पानी में खड़े रहना, चिता सत्याग्रह यानी चिता लाश के तरह नदी किनारे लेट जाना, यहां तक कि फांसी सत्याग्रह। इस आंदोलन के जो लीडर हैं अमित भटनागर, Okay. I'll cover this, okay? 11 दिन से अनशन पर भी रहे। उनकी यह मांग थी कि प्रोजेक्ट में हुए 400 करोड़ रुपए की एलिजेड घपले की जांच हो और डिस्प्लेस्ड परिवार के साथ जो मुआवजा और रिहैबिलिटेशन की बात है उस पर कोई कॉन्क्रीट प्लान हो। 17-18 दिन तक यह प्रोटेस्ट चलता रहा। फिर 20 जुलाई की सुबह 5 बजे प्रोटेस्ट साइट पर पुलिस पहुंचती है। भटनागर समेत कई प्रोटेस्टर्स को जिनकी तबीयत बिगड़ रही थी उन्हें जबरदस्ती वहां से
हटाया जाता है, कह लीजिए घसीटा जाता है। प्रोटेस्टर्स का आरोप है कि फिर उन्हें इलीगली डिटेन भी किया गया था। पुलिस ये सब बातें डिनाई करती है। भटनागर को अस्पताल लिया जाता है। सरकार का जस्टिफिकेशन है कि बराना नदी का वाटर लेवल बढ़ रहा था और प्रोटेस्ट साइट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज के नीचे था, वहां लोगों की जान को खतरा था। उफ, इतनी परवाह लोगों के लिए। दिल्ली में वांगचुक जी को इसी तरीके से अगवा कर लिया क्योंकि उनके सेहत का इतना ख्याल था, और यहां इस तरीके से लोगों को घसीट घसीट कर बाहर लिया गया। यह प्रोजेक्ट बुंदेलखंड जैसे सूखे इलाके में सिंचाई और पीने के पानी के लिए जरूरी बताया जाता है, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व जंगल और वहां रहने वाले आदिवासी कम्युनिटीज पर सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ने वाला है। उनके डिस्प्लेसमेंट, उनके रिहैबिलिटेशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस जैसे सवाल कई कई समय से उठते आए हैं, लेकिन उसका कोई साफ जवाब हमें नहीं मिलता है। अब लेकिन ये जो जल समाधि है, ये संसद के पास तो नहीं हुआ था, दूर दराज के क्षेत्र में हुआ था। सरकार को कोई फर्क पड़ा नहीं, कवरेज ज्यादा हुआ नहीं, तो प्रोटेस्ट को जबरदस्ती खत्म करवा दिया गया। कावेरी के पानी को लेकर विवाद देश के लिए कोई नई बात तो नहीं है। कई दशकों से लेकर इसको खींचातानी चलती आई है। 28 जुलाई को कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने ऑर्डर दिया कि कर्नाटका अपने केआरएस डैम से तमिलनाडु को 3500 क्यूसेक पानी अगले 15 दिनों तक रोज रिलीज करेगी। इसके खिलाफ मांड्या डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स और प्रो कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशंस हाईवे पर उतर आते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं, कर्नाटका के साथ इसे अन्याय बताते हैं। 31 जुलाई को केआरएस डैम साइट पर बीजेपी और किसान संगठनों ने मिलकर एक बड़ा प्रोटेस्ट का आयोजन किया। राज्य को 1500 से ज्यादा पुलिस फोर्स वहां डिप्लॉय करनी पड़ी। अब दिलचस्प बात यहां यह है कि कर्नाटका में कांग्रेस की डीके शिवकुमार की सरकार है और यहां बीजेपी खुद फार्मर राइट्स के लिए नारेबाजी कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। माने यहां किसान एंटी नेशनल नहीं है, यहां किसान फॉरेन फंडेड नहीं है। माने किसान अपने हक के लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकता है, आवाज उठा सकता है। अच्छा, पंजाब के किसान ये काम नहीं कर सकते हैं, उनको बाहर से फंडेड होना होता है, बाकी देश के किसान ये काम कर सकते हैं। Good line. Okay. Okay. Fuck. डिजिटल की डिजिटल इंडिया सेल आ गई है। Sorry, I was. ऋषिकेश हाईवे को 7050 करोड़ के आसपास रुपए खर्च करके 4 या 6 लेन बनाने का जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए 4000 पेड़ कटने थे। इनमें से कई साल के पेड़ थे जो 100 साल पुराने थे। तो जुलाई में स्टूडेंट्स, रिटायर्ड ऑफिशियल्स, एनवायरमेंटलिस्ट साथ आए और हमें वही चिपको मूवमेंट वापस जिंदा होते दिखा। लोग पेड़ों को गले लगाकर खड़े हो गए ताकि उन्हें काटा ना जा सके। कुछ वीडियोस में प्रोटेस्टर्स लॉगिंग मशीन्स के सामने बैठे दिखे, कुछ रो पड़े जब उनके सामने ऐसे पुराने पेड़ काटे गए। लेकिन सस्टेन्ड प्रोटेस्ट का असर हुआ। इट मैटर्स। आवाज उठाना से कुछ होता जरूर है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने आखिरकार ट्री फेलिंग को सस्पेंड कर दिया और नए सिरे से स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत शुरू की। दूसरा आंदोलन थोड़ा कम चला लेकिन उतना ही लंबा था। नर्सिंग एकता मंच के बैनर के अंडर हजारों अनएम्प्लॉयड नर्सिंग ग्रेजुएट्स देहरादून में 150 से ज्यादा दिनों से सीनियोरिटी बेस्ड भर्ती की मांग कर रहे थे, एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट की बजाय। कुछ प्रोटेस्टर्स पानी की टंकी पर चढ़ गए। स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट ने खुद पेट्रोल डालकर आत्मदह करने की कोशिश की। एक प्रोटेस्ट के दौरान 4 कैंडिडेट्स ने कथित तौर पर फिनाइल पी लिया जब हेल्थ मिनिस्टर के साथ बातचीत नाकाम रही। दोनों केसेस में एक कॉमन चीज हमें दिखा। प्रोटेस्टर्स के पास ना कोई इंस्टाग्राम फेम था, ना कोई नेशनल मीडिया नैरेटिव था, ना कोई आईटी सेल था। बस अपनी जान की बाजी लगाकर वो अपनी मांगों के लिए खुद खड़े हुए थे, किसी के लिए रुके हुए नहीं थे।
ऐसे ही न जाने कितने प्रोटेस्ट अनशन पूरे देश भर में चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता है। देशभक्त पर अगर हम चाहें भी तो हम इन प्रोटेस्ट को कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना मैन पावर ही नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, हर क्षेत्र में यह प्रोटेस्ट हो रहा है, हर पार्टी के अंडर यह प्रोटेस्ट हो रहा है। जैसे पंजाब के किसान भाई एक बार फिर से लंबे आंदोलन के लिए अपनी कमर कस रहे हैं। अभी जुलाई के महीने में ही एक ग्रुप हरियाणा के बॉर्डर से लौट चुका है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो वापस भी आ सकता है। 21 जुलाई को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसान देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले दिल्ली की तरफ मार्च करने निकले, एक किसान महापंचायत के लिए। लेकिन हरियाणा पुलिस ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही भारी बैरिकेडिंग लगा दी और फार्मर्स को वहां रोक दिया। किसानों का मुद्दा क्या है? किसानों का मुद्दा है इंडिया यूएस के बीच में चल रही बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट बन गया है। किसानों का डर यह है कि टैरिफ कम जैसे ही होंगे, उससे सस्ती अमेरिकन प्रोडक्ट जैसे डीडीजी, रेड सोरघम, सोयाबीन ऑयल, ट्री नट्स भारी सब्सिडी के साथ भारतीय बाजार में आ जाएंगी और छोटे किसानों की इनकम तबाह कर देगी। सरकार उधर कह रही है नहीं 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 नहीं, एग्रीकल्चर तो हमारे लिए एक रेड लाइन है, डील सिर्फ बैलेंस्ड होगा। पर ऐसा होगा या नहीं? किसान मांग कर रहे हैं कि जब तक निगोसिएशन डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं होते हैं, हम सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? सरकार के वायदों पर ही भरोसा करना मुश्किल हो गया है। अब ये देश बचाओ मोर्चा या डीबीएम, इसे इन लोग कह रहे हैं कि ये एक देशव्यापी मुहिम है और ये बस एक शुरुआत है। उधर 10 अगस्त को पूरे देश भर में 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा एक साथ एक दिन नेशन वाइड प्रोटेस्ट का आह्वान कर चुके हैं। तालकटोरा स्टेडियम में हुई एक कन्वेंशन में 5000 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर डिसाइड किया कि 4 लेबर कोड्स वापस लिए जाएं, एमएसपी को लीगल गारंटी मिले, नए ट्रेड एग्रीमेंट्स रोके जाएं, रेल रोको, रास्ता रोको, जेल भरो जैसे प्रोग्राम्स की चेतावनी सरकार को दी गई है। यह देश का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड प्रोटेस्ट बन सकता है, लेकिन अभी तक इसको उतनी कवरेज नहीं मिली है जितनी शायद मिलनी चाहिए। उधर एक और प्रोटेस्ट को कवरेज नहीं मिली है। आसाम में अलग ही खेल चल रहा है। एक तरफ बाढ़ चल रही है, लोग मर रहे हैं, डूब रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस की मार चल रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क के पास इंगले पत्थर में यहां आसाम टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक 5 स्टार होटल और टी ट्राइब कल्चरल म्यूजियम बनाने की तैयारी में है। अच्छी बात है, लेकिन इसमें आदिवासी कम्युनिटीज का फिक्र और एक वैलिड कंसर्न है कि वहां की फ्रेजाइल इकोलॉजी और उनके ट्रेडिशनल जो जमीन अधिकार है, दोनों का वहां हनन हो रहा है। इंडिजिनस मिसिंग समुदाय से आने वाले एक्टिविस्ट प्रणब डोले, उन्होंने इस प्रोटेस्ट की अगुवाई की। 12-13 जुलाई को उन्हें गुवाहाटी से अरेस्ट कर लिया गया। चलिए, कोई नई बात नहीं, हमारे देश में आवाज उठाओ, अरेस्ट हो जाओ। गोलाघाट सेशंस कोर्ट ने फिर लंबी सुनवाई के बाद 30 जुलाई को उन्हें जमानत दे दी। कहा कि भाई ना तो कोई सबूत बिठाने का खतरा है और ना इनके कोई भागने का। अब देखिए स्टेट का खेल। अगले ही दिन आसाम सरकार ने उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए लगा दिया, जिसके थ्रू आप जानते ही हैं, बिना ट्रायल के, बिना फॉर्मल चार्जेस के किसी इंसान को 12 महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये लॉ सिर्फ देश की सुरक्षा जब डैमेज होती है या खतरे में आती है तब आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन लगता है यहां कुछ नेतागण की सुरक्षा खतरे में आ गई थी। पहले लद्दाख के लिए आवाज उठाने वाले वांगचुक पर एनएसए लगाया गया, अब आसाम के लिए आवाज उठाने वाले डोले पर लगाया जा रहा है। असली एंटी नेशनल कौन है यहां, बताने की जरूरत है। एक तरफ फसल खराब होती है तो किसान कर्जे से मर जाते हैं, और अगर फसल अच्छी भी निकल आए तब भी चैन नहीं। मध्य प्रदेश में इस साल मूंग की बंपर फसल हुई है, लेकिन किसानों को उसका सही दाम नहीं मिल पा रहा है। तो 19 किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले भोपाल की तरफ मार्च करना सही समझा। अपने साथ बोरिया, बिस्तर, खाना पीना सब लेकर वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार होकर निकले। प्रोटेस्टर्स ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए, सीएम मोहन यादव के घर के तरफ बढ़ने की कोशिश की, फिर वीर सावरकर ब्रिज के पास धरने पर जाकर बैठ गए। उनकी मांगे बड़ी सिंपल थी। 100% मूंग की फसल एमएसपी पर खरीदी जाए, क्योंकि अभी का रूल है केंद्र का कि भैया 25% की खरीद आप कर सकते हो एमएसपी के नीचे, मतलब बाकी का 75% फार्मर्स को खुले बाजार में एमएसपी से बहुत कम दाम पर बेचना पड़ेगा। यानी आप करीबन 8,500-9,000 रुपए पर क्विंटल एमएसपी के मुकाबले 4,000-5,000 रुपए पर क्विंटल आपको बेचना पड़ेगा।
आवाज उठाने से बात बनती है, ये किसानों ने फिर से दिखा दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने दबाव में आकर प्रोक्योरमेंट सीलिंग को बढ़ा दिया। सरकारें झुकती हैं, झुकाने वाला चाहिए। जंतर मंतर से कॉकरोच तो हट गए, लेकिन फिर 3 अगस्त को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट डॉक्टर्स ने वहां प्रोटेस्ट किया। एफएमजीई के रिजल्ट और आंसर की को लेकर यह प्रोटेस्ट हुआ। उनकी मांग थी कि कट ऑफ कम किया जाए और एग्जाम में हुई गड़बड़ियों की जांच हो। मैंने अभी भी एग्जाम में घपले हो रहे हैं, इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद भी। यहां बस सिल्वर लाइनिंग अच्छी बात यह थी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने भैया तुरंत समझा कि दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने क्विकली रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत करना शुरू किया। शायद इसीलिए, क्योंकि हो सकता है कि यह दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, कैमरास के सामने प्रोटेस्ट हुआ, इमीडिएटली कॉकरोच जनता पार्टी के बाद प्रोटेस्ट हुआ। वैसे 9 अगस्त को सेव मणिपुर के बैनर तले जंतर मंतर में एक और प्रोटेस्ट होने वाला है। क्या मणिपुर की पुकार मोदी सरकार सुन पाएंगे या ये अभी भी इम्पॉसिबल है? देश में शायद पेपर लीक के बाद एथेनॉल स्कैम सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। नागपुर में यूथ कांग्रेस वर्कर्स ने नितिन गडकरी के घर के बाहर E20 एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। पुलिस हमेशा यहां एकदम पहले ही आ जाती है, यहां बाद में कभी नहीं आती है, पहले ही आ जाती है और पूरा एक्शन में आ जाती है, प्रोटेस्टर्स को डिटेन भी कर लेती है। और यहां तो मांगे आपको पता ही है, E20 से गाड़ियों का जो माइलेज कम हो रहा है, गाड़ियों की जो हत्या हो रही है और देश का जो पैसा बर्बाद हो रहा है, अब उसे रोका जाए, इस स्कैम को एक्सपोज किया जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये तो कुछ ही प्रोटेस्ट की हम यहां बात कर रहे हैं। देशभक्त पर हमारे पास आए दिन न कितने मेल्स आते हैं, ये मुद्दा कवर कर दो, हमारा प्रोटेस्ट हाईलाइट कर दो। लेकिन 8 लोगों की टीम के साथ, छोटे ऑफिस के साथ हमसे जो हो पाता है हम करने की कोशिश करते हैं। जितने सवाल पूछे जा सकते हैं हम पूछते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सरकार को और अकाउंटेबल बनाया जाए और जवाब मांगे जाएं, तो इन प्रोटेस्ट को आपको जानना पड़ेगा। बहुत से रीजनल यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम चैनल्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की आवाज को नेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं। कोई एक चैनल ये सारा काम नहीं कर पाएगा। सवाल यह है कि सरकार इस ट्रेंड को समझती है या नहीं समझती है कि गोदी मीडिया और व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा का काम अब नहीं चल पा रहा है। देश की असलियत लोगों को साफ साफ दिख रही है, लोग रेजिस्ट करना शुरू कर चुके हैं। और अगर हेकड़ी सरकार ने अपनी कम नहीं की, तो मैं एक गारंटी जरूर दे सकता हूं कि सरकार की हेकड़ी तोड़ना लोगों को आता है, जनता को आता है, बहुत जल्द ऐसा होगा भी। जय हिंद। बाय द वे, कमेंट्स में आप अक्सर पूछते हो कि भाई देशभक्त ये टी शर्ट्स कहां से लाते हो? Wait. Also, वो तो shout out to Deshbhakt's t-shirt, okay? He prints those t-shirts, okay? बता दूं कि पिछले 8 सालों में He prints those t-shirt and you should buy his t-shirts, okay? Shout out to Deshbhakt. जो भी टी शर्ट आपने मुझे Wait, sorry. Okay. Okay. Oh, Pak. I'll. Damn. That was fucking retarded. Wait, रुक जाओ. कुछ देर चेस खेल लेता हूँ उसके बाद. Damn. Will you do this? Because I'm ready to do this.
Wait, I'm gonna be back to reacting. गुड जॉब। ओके, 600 करके हम शुरू करते हैं, ठीक है। E4, चलो 600 करके हम फिर से रिएक्टिंग करना शुरू करते हैं। Oh fuck. Wait. पहले दिन 2 bishops versus 2 knights. I think I win. Okay. I'm like fairly sure that I can win this position.
Damn, bro. After. Okay. Let me just chill and just watch something, okay? Damn. Damn. देशभक्त पर पहने देखा है वो हमारे ही चैनल का मर्चेंडाइज है, जैसे ये नया रेजिस्ट का टी शर्ट डिजाइन। थैंक्स टू मुंबई पुलिस फॉर द इंस्पिरेशन। ये हाई क्वालिटी मेड Shout out to Deshbhakt. कहाँ से खरीदना है देख लो. टू ऑर्डर टी शर्ट्स आपको मिलेंगे kadakmerch.com/the Yeah. karakmerch.com that's dash Deshbhakt. देशभक्त पर, और डिलीवरी इज Okay. अक्रॉस इंडिया। Let's watch the point too. Okay. I think we generally have an idea right now ki what was the protest about and what are the basic events that happened during and about the protest, right? I think we are up to date with that shit. This in itself was not like about the protest in itself. It was about like the general like temperature of the scene that was dictating like why protests are happening in India and what are the different types of protests that are happening in India. Wait, my feet savings. Oh shit. No free feet pics, okay? No free feet pics for you. You have to pay for it. If my Oh, fuck me, man. Fuck me. हमारे देश में एक उफान आ रहा है। पहली बार ये बात तो मैं बता नहीं रहा हूं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट के समय भी हमने आपको बताया था, और झारखंड के पिछले एपिसोड में भी हमने ये बात की थी कि कैसे ये एक प्रोटेस्ट नहीं है, एक पेपर लीक नहीं है, एक रिक्रूटमेंट स्कैम प्रोटेस्ट नहीं है। दिस इज मच डीपर। Okay. देश के इतिहास में पिछले 10 सालों में देख लो, ऐसा नहीं हुआ है। 20 दिन पहले, ज्यादा दिन बात नहीं, 20 दिन पहले जो दिल्ली में स्टूडेंट्स और बाकी देश से जो स्टूडेंट्स दिल्ली में आए थे, जंतर मंतर में आए थे, उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ कूच करने की कोशिश की। चलो सदन मार्च होता है और दिल्ली पुलिस बहुत ही ब्रूटल फोर्स से स्टूडेंट्स को पुश बैक करती है, पैलेट गन्स तक का इस्तेमाल होता है। और अब 20 दिनों बाद 1000 किलोमीटर दूर रांची में उसी तरीके का एक और प्रोटेस्ट हमें दिखने को मिल रहा है, एक और शॉकिंग प्रोटेस्ट मार्च, और उसी तरीके का पुलिस पुशबैक भी दिखने को मिल रहा है। हालांकि काफी चीजें यहां अलग भी थी। डे 17 स्टूडेंट प्रोटेस्ट का झारखंड में जो चल रहा था, झारखंड के कैपिटल रांची में चल रहा था। अब स्टूडेंट्स ने अपने प्रोटेस्ट को एकदम चरम सीमा तक वो ले गए, जब हजारों जेपीएससी और जेएसएससी एस्पिरेंट्स झारखंड विधानसभा के तरह मार्च करने निकल गए, एक ही मांग के साथ कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, फेयर प्रोब होना चाहिए। ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम था, जिसको बेच डाला था, सब कुछ लीक कर डाला था, सब कुछ घूसखोरी में मार डाला था, बच्चों के फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया था, पूरे तरीके से सिस्टम को चेंज किया जाए, जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें पनिश किया जाए। पुलिस को इसके बारे में पहले से ही ऑब्वियसली मार्च के बारे में मालूम था। 1500 से ज्यादा पुलिस पर्सनल को डिप्लॉय किया गया, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगाए गए, रांची में स्कूल बंद कर दिए गए, लेकिन स्टूडेंट्स रुकने वाले नहीं थे। जैसा कि हमने दिल्ली में भी देखा, हमने यहां भी देखा कि मल्टीपल बैरिकेड्स को स्टूडेंट्स ब्रीच कर गए। 3 लेयर ऑफ बैरिकेड्स को ब्रीच करते हुए, टियर गैस से जूझते हुए, वाटर कैनन से जूझते हुए, लाठी चार्ज से जूझते हुए वो असेंबली हाउस के गेट तक आ पहुंचे। झारखंड असेंबली को बंद करना पड़ा, नेतागण को आनंद फानंद वहां निकलना पड़ा, क्योंकि लगता है उनको भी सिक्योरिटी थ्रेट लगने लगा होगा। अब बताइए सिक्योरिटी थ्रेट क्यों? कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन तो आ नहीं गई है। तिरंगे के साथ स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर वहां असेंबली तक पहुंच गए। तो चाहे दिल्ली में संसद की तरफ कूच हो या रांची में असेंबली। Okay, here's the thing. There is a general. Okay, the idea that students reaching the legislative assemblies or parliaments in itself is a threat to the country is bullshit, right? That in itself doesn't constitute a threat, and that does not should not give officers or the law enforcers
like the permission to do lethal force. But in the same place, is it okay to fill personal threat and to move the important ministers from the place? Maybe. And I think like, because in a mob scenario, right, like you cannot control all the people that are there out, and one mistake done by one kid or one person can like create the whole scenario like deadly and lethal. So I don't think it's like, although it's not okay to use lethal force, not only lethal force, also like hardcore force on students for entering to prevent them entering the parliament or the legislative assembly or some shit like that. But moving the ministers and keeping them in safety, I think is generally okay, as long as the state is sending somebody to do the talks with the students. That's my opinion. You can have your own opinions which are different than mine. You can write that in comments, I guess. दिल्ली की तरफ कूच हो, एक वार्निंग तो कहीं ना कहीं जाती है कि भैया देश के लीडर्स अब तो समझ जाओ, स्टूडेंट्स की डिस्ट्रेस इतनी ज्यादा हो चुकी है, उनकी दिक्कतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो लाठी चार्ज, टीयर गैस, वाटर कैनन से जूझते हुए भी आपके गेट तक आ पहुंचेंगे। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी, JKLM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, JKLM के जो लीडर है देवेंद्र नाथ महतो, वो 9 दिन हंगर फास्ट के बावजूद, 10 किलोग्राम वेट लूज करने के बावजूद ये मार्च में ज्वाइन करते हैं। चलने लायक तो नहीं थे तो स्ट्रेचर में ही सही, लेकिन ये मार्च को लीड कर रहे थे। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि रिवर्स ऊनो, इनके साथ जो छवि थी, जो पिक्चर था, वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शिबू सोरेन का था, जो कि इनकम्बेंट हमारे जो चीफ मिनिस्टर है झारखंड में हेमंत सोरेन, उनके ही पिता हैं। तो अब इन पर कार्रवाई करना भी तो कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके की पॉलिटिकल लैंग्वेज, सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकल लैंग्वेज भी कटघरे में डाल रही है, जहां तक JMM सरकार है, यहां तक कि जो सहयोगी कांग्रेस पार्टी है वो भी काफी दिक्कतों में आ रही है। देशभक्त के आज के एपिसोड में पहले आपको बताएंगे कि आज मार्च में क्या हुआ, जिस तरीके से असेंबली घेराव का प्लान था, पुलिस एक्शन कैसा था, क्या पुलिस ने कोई रिस्ट्रेंट दिखाया, दिल्ली से कैसे ये चीज अलग थी, जो पुलिस का व्यवहार था वो कैसे अलग था, उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद ये जो डेवलपमेंट है, इस तरीके की पॉलिटिक्स खेली जा रही है, इसको गुड प्रोटेस्ट क्यों बोला जा रहा है, जंतर मंतर को बैड प्रोटेस्ट क्यों बनाया जा रहा है, और कैसे बीजेपी कांग्रेस को अभी कटघरे में डालने की कोशिश कर रही है, उस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली एक और सवाल जरूर उठना जरूर, This is a thing I'll probably talk about, the number 4 thing, right? What is like, what is BJP trying to do with this protest? I think we can talk a little bit right now that like BJP's strength is like instability. As I said, like BJP is a really good opposition party, and BJP like fucking thrives when they are in opposition. They don't really rule well, and they are like mega authoritarian. But as they're mega authoritarian, they do understand the psyche of other authoritarian or generally like strongman leaders. That's why they know how to like destabilize places so that they can show that, hey, I'm sending my strongman to stabilize this place, basically, right? If you have heard this phrase generally, like I've heard this phrase in case of Africa, basically, right? अफ्रीका में सहेल रीजन में जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, वहाँ पर बेसिकली 3 सिक्योरिटी और रादर 2 सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स होते हैं। एक होता है कि नेटो बेस्ड फ्रांस एंड USA, और दूसरा सिक्योरिटी प्रोवाइडर होता है रशिया। आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दिस फ्रेज दैट फ्रांस like earns money by stabilizing a place and Russia earns money by destabilizing a place. Basically, Russia, when they enter and strain like a country's forces and stuff like that, they will cause like mass civilian casualties. They will like bomb indiscriminate villages and shit like that in Africa, basically. And what they do is generally increase the temperature so much so that the destabilization from the terrorists will like relatively lesser in respect to the destabilization caused by the Russian mercenaries, right? The same thing goes for BJP.
BJP knows the game, how to destabilize a place really fucking well. Okay, and this is a thing I think we should be a little bit wary of when we are like seeing narratives like this is like a good protest, this is like a good boy protest, and like the Delhi people were bad boys. Basically, we have to be like a little bit wary of this narrative. Basically, that's what I'm saying. भी है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो रांची हो, सरकार तभी क्यों रिस्पॉन्ड करती है जब बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं? उससे पहले भी तो रिस्पॉन्ड किया जा सकता था शायद। क्या बच्चों का, क्या देश का सब्र का बांध अब? ब्रो कितना ऐड देगा ब्रो? Before you buy this, this डैम exact product could be cheap. टूट रहा है। Okay. स्टूडेंट्स का आक्रोश इतनी जल्दी चेंज हो रहा है और काफी नए डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। आज जो मार्च हमने देखा उसको कॉल किया था जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मोर्चा, एक नया फ्रंट। इन्होंने कहा कि अब हम विधानसभा घेराव करेंगे। सुबह 10:30 बजे ये मार्च शुरू होता है ओल्ड असेंबली कॉम्प्लेक्स से शहर के, और जो डेस्टिनेशन है मार्च का वो है न्यू विधानसभा बिल्डिंग 4 किलोमीटर दूर। इस 4 किलोमीटर के फासले में 1500 से ज्यादा पुलिस पर्सनल, आरएएफ, आईआरबी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड क्विक रिएक्शन टीम पर्सनल को डिप्लॉय किया गया था। वहां बच्चे आते हैं ना, कोई लाठी के साथ नहीं, पत्थर के साथ नहीं, ट्राई कलर्स और प्लैकार्ड्स लेकर आते हैं और मार्च को शुरू करते हैं। मिनटों के अंदर यहाँ भी स्पाइडरमैन आ गया था क्या? लाइक स्पाइडरमैन ओवर ड्यूटी कर रहा है प्रोटेस्टर्स में, सॉरी प्रोटेस्ट में। स्टूडेंट्स अपना पहला बैरिकेड क्रॉस कर देते हैं, फिर दूसरा बैरिकेड को भी तोड़ देते हैं। तीसरे बैरिकेड पर आते आते, जगन्नाथ टेम्पल रोड पर आते आते ये असेंबली कॉम्प्लेक्स के पास आ चुके, जहां पुलिस ने वाटर कैनन का सबसे पहले इस्तेमाल किया। लेकिन स्टूडेंट्स का आप जोश कह लीजिए, आक्रोश कह लीजिए, वाटर कैनन जब उन लोग शुरू करते हैं पुलिस वाले, तो ये वाटर कैनन में नाच गाना शुरू कर देते हैं, शैम्पू लगाकर वाटर कैनन में नहाना शुरू कर देते हैं। यहां तक ये भी एलिगेशन लगाते हैं कि वाटर कैनन को लेकर भी घपला हुआ है, इतना कम वाटर प्रेशर आ रहा है। आप सोचिए डेस्परेशन कहां तक चली गई है स्टूडेंट्स की, कि वो कह रहे हैं कि अरे हम तो इससे ज्यादा प्रेशर हैंडल करने के लिए तैयार हैं, तुम मारो तो हमारे ऊपर पानी अच्छे फोर्स से। वाटर कैनन में भी घपला किया गया। वाटर कैनन तो साफ तरीके से फेल कर जाता है और उसके बाद पुलिस रिजॉर्ट करती है टीयर गैस शेल्स प्रोटेस्टर्स पे फायर किया गया था। थर्ड बैरिकेड जब ब्रीच होता है, स्टूडेंट्स को हमने When I see this protest, I feel goosebumps in my fucking arm and shit, bro. Listen, I don't make that much money कि I could like volunteer my money and time for this to like so that I'll earn back my living through my social media stuff. But damn, if I get enough following to sustain myself, I'll like leave my current team and yeah, go in this protest myself. Yeah, then I'll not need anybody's permission to visit any protests, do any interviews I want. Yeah, that would be really nice. But damn. देखा किस तरीके से वो भाग रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कतें जरूर आई, कुछ स्टूडेंट्स इंजर जरूर हुए हैं, और लाठी चार्ज जब होती है तो उसमें कुछ हेड इंजरीज की भी खबरें आ रही हैं। फीमेल स्टूडेंट्स को भी इंजरी आई है। ये सब हो रहा था जब देवेंद्र नाथ महतो आते हैं असेंबली में, एम्बुलेंस में, स्ट्रेचर में। उन्हें इनिशियली रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर उन्हें परमिशन मिलती है आगे जाने के लिए, और वो सिट इन में बैठते हैं, पालकी लेकर जाते हैं। उनके जो वॉलंटियर्स हैं वो उन्हें और आगे ले जाते हैं। कैसे नहीं मानेगी ये सरकार? अगर ये सरकार ये आवाज को नहीं मानती है तो ये सरकार को पूरे विश्व स्तर पे तानाशाही, निरंकुश, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार के रूप में याद रखा जाएगा। दोपहर होते होते प्रोटेस्टर्स असेंबली प्रेमाइसेस के और भी पास आ जाते हैं। वो मेन गेट से जो भी रोकने की कोशिश करते हैं वो अलग अलग रूट से आ जाते हैं, और इसीलिए हाउस को अडजर्न करना पड़ता है। आप सोचिए नेतागण स्टूडेंट से इतना डर गए। इसके बीच खबर आती है, देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट का इंपैक्ट क्या होता है। इसके बीच खबर आती है कि झारखंड सीआईडी ने फॉर्मर जेपीएससी चेयरपर्सन को अब अरेस्ट कर लिया। 1997 के आईएएस ऑफिसर, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, जेपीएससी चेयरमैन, इनको फरवरी बनाया गया था। अब
फाइनली सीआईडी ने इन्हें पहले तो चार्जशीट किया था, लेकिन अब इन्हें अरेस्ट भी कर लिया है। ईडी सेपरेटली एक मनी लॉन्ड्रिंग केस भी इन पर इस केस में दर्ज कर रही है कि कहीं इसमें मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है उसका इंपैक्ट सेंटर पर भी पड़ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। सी, जहाँ पर ही पॉलिटिकल पार्टीज का बैनर हो वहाँ पर ही देखोगे कि वायलेंस होता है, लाइक प्रोटेस्टर्स की तरफ से। जहाँ पर ही देखोगे कि तिरंगा होता है वहाँ पर स्टूडेंट्स लोग शांतिपूर्ण रहता है, या स्टूडेंट्स लोग हो, फार्मर्स लोग हो, जहाँ पर ही लाइक प्रोटेस्ट का बैनर तिरंगा होता है, you'll see like those dissenters are generally peaceful, and wherever there are like banners of political parties, especially BJP, violence ensues. True. Hmm. I think we have watched enough. Like, is there anything additional he's gonna say? Wait. Give me like 2 minutes, okay?
Hmm. Okay. Damn. Damn. पेपर लीक करना बंद करना था, राइट? अगर एग्जाम ही नहीं होगा तो पेपर लीक कहाँ से होगा? मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। पर पेपर लीक नहीं हुआ, एग्जाम नहीं होगा तो पेपर लीक होगा क्या? आई गेस नीट वालों को भी ये शिक्षा लेनी थी, नहीं लिया, प्रोटेस्ट हो गया। वही तो गलती हुआ। एग्जाम करोगे तभी ना पेपर लीक होगा, एग्जाम करना बंद कर दो। Damn. But the problem is, like, we have this notion in our country that CBI is like this big bad guy जो जिसके पास बहुत सारा resources है, but sadly I don't think CBI is like that good of a org in India. Okay, I was reading about like this in a like opinion piece. I don't know how true it is. I'll actually like research about it someday later. That like CBI has like very like low like case closing rate, right? Like I'm pretty sure like it has a lower case closing rate even than the like state police of Bengal or some shit like that. Like I'm not even kidding. Damn.
Listen, the fact that it happened is sad, and it's a tragedy for our Indian system. But Rahul Gandhi didn't even join the CJP movement up till like the student got bit the shit out of them. Okay, so yeah, that's that. Yeah, this weird conspiracy theory is like the sad thing is that like the government can like not even through a court order or some shit like that, a random police station can like file like emails to like social media accounts, companies, and your accounts would be like GG's, right? Whereas on the other hand, like the state can lie like a fucking motherfucker, and there is no recourse. We have like no fucking recourse. ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास resources नहीं है इसलिए recourse नहीं है. Like actually, like what is the recourse that we actually have against like these false allegations from the state? I don't know. Based. Based. True. True. Give us some solutions. Well, is there any quick solution out there? Like, what is the quick solution? I guess like that's my question. What is the like solution, right? Is there any? Like in Delhi, the ask was just Dharmendra Pradhan should resign, and वो करने के लिए like 3 हफ्ते लगा दिए, right? But
till now I didn't really understand what's the exact ask of the students. And if it comes to CBI probe, I don't know, is it in the hands of state government or is it in the hands of central government? Like, isn't it like BJP's job or like central government's job to like send like to assign CBI this type of cases, or can state government like ask CBI? I actually don't know what's the process behind it is. Okay. I guess the only thing that like the protesters are asking that the government is not allowing is like the CBI probe on the examination, I think, right? Or is there anything else that the government is disallowing the students from? Hmm. Wait, what? Okay, we'll watch some videos from this news network. But for before that, like, let me give me like 2 minutes, okay? Let me complete this game. Damn. Wait, what's this about? Inside the machinery of anti-Muslim hate in Narendra Modi's Indian documentary. Okay. Who is the? I guess who is the like writer of this? Like, who is the speaker? I guess that's my question. No.
Sure. Where do these motherfuckers come these things from? Like, where does this idea come from? Oh my god, like, thug jihad, jameen jihad. Like, just curious, like, where these guys, like, do they, like, think in their dreams, oh my god, एक मुस्लिम आया, वो थूक जिहाद करके चला गया, like, damn, bro. Like, do Muslims come in your fucking dream, bro? Like, damn. Like, on a serious note, आज को हम लोग इस सरकार के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं because like this fascistic government is this like bad in like enforcement of any fucking law and order around the country, enforcement of any like providing the monopoly in violence or whatever. But if that was not the case, would there be enough people standing against this government, against this unsecular and like this like religious dogmatic rule? अगर basically what I'm saying is अगर इकोनॉमी सही रहता एंड अगर बेसिकली सबका दिनचर्या ठीक ठाक रहता, मेजॉरिटी हिंदूज का बात कर रहे हैं, तो would that majority Hindu population would they speak about this government at that point of time? Like, that's the most scary part. Like, we always know that authoritarian and fascistic rulers are bad, make bad government, right? Do bad governance. It's bad for the economy and bad for overall health of the country. But if that's not the case, like, is this thing in itself, the unsecular, religiously dogmatic and crazy, like violence inducing and thing, would that be talked about? Would that be like protested against in India? I don't know. Like, even today, after so much protest and so much discussion about free speech and police brutality, like do we think we would see some like straightforward legislations, or at least efforts towards straightforward legislations against police brutality in India? Or would we see some collective notion against the religious dogmatic nature of this government? Would we see anything like that? Who knows? Okay, listen. This is for the journalist, okay? If you're going to Muslim area and doing these interviews, just hide their faces, okay? Like, just blur their faces or some shit like that. These people are not media savvy people, okay? Like, you are making these people targets of like the government.
At least if you are making these people your content, hide their faces, okay? Blur their eyes or hide their mouth or some shit. Like, make them unidentifiable. Please, please, for God's sake, do this, okay? Like these, like these boisterous dialogues would not exist if they actually had to give or actually had to lose their lives, right? जान देना पड़ेंगे दे देंगे, पर सच में जान देना देने का बात आएगा तो नहीं देगा, ठीक है? They know that they will be protected by the state. They will be protected by different layers of organizations that are directly fueled by the state machinery. And most of the times, when violence occurs, it happens with the complicity of the police and the state. So, this boisterous dialogue only exists when they know for a fact that they are the protected group and the other side are the prey. So they can pretend to be the martyrs, but who are actually the predator. Oh my god! Oh my fucking god! Oh my fucking god! You hide the face of a fucking vigilante and don't hide the face of the like victim's family. What the fuck is wrong with you? Like, zero media savviness, zero like idea about like, or zero care about like the people you are interviewing and trying to represent. No honesty to the story. What the fuck is wrong with you? You are masking the fucking vigilantes? Damn. Oh my god! Okay, that's the unmasked face, by the way. His name is Sumit, okay? Oh my god! They're masking the vigilante's face. And not masking a single victim's family's face? What the fuck?
Also to the international media who are like India phobic or whatever, who wants to hate on India or whatever. Like, these are the topics you can like pick up without doing retarded fucking racist shit. Like, these are like actual problems in India. Like, cow in the name of cow saving, these people are murdering like minorities, like forcing Christians to convert to Hinduism and stuff like that. Like, it's crazy that nobody talks about this thing in like international, like even like protect Christianity type of circles. Like, these things are not talked about. Like, they'll rather talk about fucking weird racist shit about your country. Like, if you want to like hate on India, like these are the actual things you can like show for to hate on us. Okay, like these are the things. If you wanna hate on us as Hindus, if you wanna hate on us as Indians, like these are the things. These are directly sponsored and facilitated by the people in the state government. But who am I speaking to, I guess? Probably someday. Probably someday BJP will be defeated. Probably someday our country will be whole again. Our government will hear our problems again. But will there be a time when we look back to the problems that we as Indians are creating to our minorities, to our own brothers and sisters of different religion, different castes? Will we be looking back at that and take a comprehensive stance and take some corrective measures about any of these things? Would that be ever a thing? Once BJP loses, will there be any justice that prevails? Or we will just turn our eyes and move on towards our future? Will we as Indians
have a nationwide conversation about this ever. Who knows? And that's a thing that sorry, that's a thing that that's a thing that really frightens me. Okay, will we come to a stage in which we look at ourselves and ask the questions: how did we allow these entities in society to be so ruthless? Yes, maybe they had protections from the state, but we as community members, we as the people of our own states, or people of India as a whole, how could we let it happen? How did we let it happen? What are our faults? What could we have done? Or what will we be doing in the future? Like, would we have those conversations as Indians ever? Ever? Once BJP loses? Or ever in the history of ever? Who knows? Who knows, man? Who knows? Everything feels so doom and gloom, man. It is our country. Like, yes, we love it. We love her. We love our mom. Right? We love our mother India. But we have some responsibilities being the citizen of this country. Will we ever hold ourselves, the state and the center, accountable for the atrocities that are happening right now? Will that ever happen? Ask this question to yourself. Ask this question to your parents. Ask this question to your brothers, your sisters, your wife or husband, your siblings or whatever, cousins. Ask this question. You don't get safety while you are alive, and you don't get dignity even when you are dead. You are cut, you are first lynched, your body is cut into pieces and thrown into a fucking sewer. That's what it's like being a minority in India. I think there should be a time. Sorry. I think there should be a time that we as countrymen should hold ourselves, the country and the states accountable for the things that are happening.
Like, literally, your fucking political godfather goes and calls Israel like the fatherland or some shit like that. Like, bro, he like fucking like thrives for like Trump's cum, okay? The two countries like that, like the leading meat that are eaten there are like beef. I didn't ever seen that these motherfuckers like protesting about any of those like or association with any of those countries regarding their pet issue, right? But no, they wanna target like the weak. They wanna feel strong once in their life by killing the unprotected while they're being protected by the state. क्यों बैठे हो भाई? कर लो नौकरी. देश के लिए भी कुछ टैक्स बचा लोगे, टैक्स बना लोगे, देश का भी कुछ उन्नति होगा, देश का रेवेन्यू बढ़ेगा एंड दिमाग में चुतियाप पे कम होगी. लाइक डू सम जॉब. Bro, they are putting their lives on line for the protection of the country from another hostile state. Whereas your own whole life's goal is to killing fucking Muslims because I don't know, they are weak because they are not protected by the state. If they looks at you wrongly, they will be charged with fucking NSA and UAP and shit like that. But you can like kill them, shoot them, fucking throw their bodies in fucking water and shit like that, and nothing will happen to you. Like, damn. Really? Really? Sure. Sure, buddy. Yeah, this is the type of conversation. Okay, wait. This is the thing I was saying. Like, you hear these talking points sometimes, not from random extremists on YouTube, not from random extremists on trains and buses, but also from your brothers, from your sisters, from your friends. Do you not, if you don't believe in this shit, do you speak up for this? Do you speak up that this thing is not true? Do you
Or do you overlook it because it doesn't personally affect you? Does it matter that these things burn our country? These things make our country a lesser livable place. These things make our country more unsafe for our minority brothers and sisters. Does it matter for you? Do you care enough to stand against it? I'm not talking about being a fucking civil right activist and going to the street or fucking doing RTI and shit. I'm saying if your friend or if your brother or if your parents are saying this talking points, do you stand up and talk against it? Do you care enough to do that? Just a question to all these liberals in my country and in my audience, I guess. I don't care. Fuck. I don't. For all those people who are not understanding what is being talked about, these are private citizens making private vigilante groups alleging random other private citizens that they are slaughtering cows in states in which cow slaughters are illegal and also in states in which cow slaughters are not illegal, and forcibly entering their house and raiding them to check if they are slaughtering cows. If they are, or if they are feeling that they are doing it, or if they are feeling that they can kill that person and get away with it, they are basically killing the Muslim men. That's what they are talking about, by the way, for all those people who are not understanding. These are private citizens who have the informal authority of the state to raid private properties without any fuck warrants. Like, these are private citizens. These have no, they have no rights to anything. They are entering homes to check for animal slaughters or cow slaughters, and if that's happening, they are basically murdering. Yeah, that's what is happening, by the way, for all the international audience who are not understanding what exactly is being talked about here.
क्या ख़त्म हो गया? क्या नेपाल में? Oh no, Pakistan is she's talking about. This is exactly what they want. They want a Hindu Pakistan, by the way. Like, they don't want to be the next like modern state with a good economy. They just want Hindu Pakistan, and that is the logical conclusion of their ideology. But do you care enough to stand up against it? That's why in military, like, disproportionately, like, Sikhs go into military, not Hindus. Okay, like, Hindus do go into military. Like, the 80% of the population are Hindus, by the way. Disproportionately, Sikhs go, like, and there are equally martyrdom of Muslim, Sikhs, and Christians and Hindus in military. So the idea that like we are waging some holy war against Pakistan or some shit like that, that's cringe. And they're not even doing that. Even if they're doing that, like evoking religious sentiments to fight wars against wars like for India against other hostile countries, I might not be 100% with it, but I would tacitly support it. But like, if you are trying to wage a war against our own fucking people, own brothers and sisters who happen to come from a different faith, I'm sorry, you are a disgusting, like, waste of human life. Now it's not a secret anymore. Damn. Okay. This made me fucking sad, bro. Okay, should we play a little bit of chess? Wait, let's see.
Okay, let's try to get like 600, then I'll do something. Okay. Ah, fuck. God. Okay, so what is today's plan is, I think I have found out like our stream structure for like next few weeks or some shit. Wait. So I think for next few weeks in our streams we would try to cover like the protests that are like happening all over India, and we would cover the general asks and demands of those people, and then we would try to cover like different updates about those protests. If you by mistake does this, it would be no, it would not be GG's because I cannot do this. No, damn. Wait, if it does this, I can do this. Okay, sure. Wait. Oh shit. Wait, what? Oh shit. I'm a dumb fuck. Okay. Damn. 600 करके हम मूव करते हैं. I don't want to fucking do this. Will he repeat moves or some shit?
Can I take this? Maybe not. Okay. Fuck. Fuck. Damn, bro. They didn't even notice. Okay, I did one blunder. That's fine. चलो 600 पहुंच के हम 2 मिनट के लिए ब्रो डोंट अबॉर्ट द गेम एटलीस्ट एक मूव दे के रिजाइन कर दो डैम दिस इज फकिंग फ्रस्ट्रेटिंग
shit, I could have done. Damn. That was a bad move. For sure. Damn. 599. 600 करके हम छोड़ेंगे. रुक जाओ. Fuck, I don't even know this line. I love this guy.
gonna take it. Damn. Okay. Let's check my stream. It's working. Damn. Wait, क्या? Cockroach Janata Party? I hate people who are like. I'm sorry. Let's not hate on more people, okay? I already hated on a fuck ton of people this stream. Yeah. Bro, कितना ऐड देगा भाई? नील रायवर्मन मारा कुछ नील रायवर्मन मरा गया चने की. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोगों ने जेनजी ने ले लिया. जेनजी के अगले निशाने पे कौन है? वो व्यक्ति जो स्टार्टिंग में 20 तारीख को पैलेट गन्स इस्तेमाल करने का ऑर्डर लेते हैं. ओके. वो पूरा फोकस जो था वो वहाँ था, उस सेंट्रल स्टेज पे था, लेकिन आप लोग भी प्रोटेस्ट पे थे. तो क्या ऐसा लगता है आपको कि वो एक नाइंसाफी टाइप है कि आप लोगों को वो सेंट्रल स्टेज नहीं मिला? लेफ्ट से एसोसिएट नहीं करना चाह रहे थे बहुत ज़्यादा ये लोग. ये भी हो सकता है. खैर, ऑल्दो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ हो या स्टेज पे संभालना हो, सब तो लेफ्ट ने ही किया था. तो इट्स और ओके, क्रेडिट ले लिया लेफ्ट ने. चलो, नहीं हम थोड़ा सा गिव मी लाइक 2 minutes, ओके? मैं थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह से आता हूँ, उसके बाद we'll have some conversations, okay? We'll just talk. Wait, fit check. How do I look, by the way? Do I look good? Especially with the flag. Yeah, I think I look. Wait, sorry. Yeah, I look good. Aura farming अच्छा हो रहा है. Aura farming अच्छा हो रहा है इसमें, I think. So what would be the next part of the stream? Next part of the stream would be documenting back the Jharkhand protest stuff, ठीक है? And today's stream would be the last stream about the previous protest, Delhi protest, and we would also talk about the Jharkhand protest. Wiki में I think 90% चीज़ मिल गया. So yeah, that's that. And we'll also like do some plannings and programmings for what would be the next part of our few week stream, or what are our goals and ambitions.
for my personal media empire? Or should I incorporate the team into my channel? People who are not really that much of an important face right now in our team, should I bring them in my media thing? But the problem with that is, like, I don't earn shit from this channel or any of my personal media things, right? So it would be like impossible for me to not only solely do this, but also like bring people into this. So I need some help, but I don't really foresee like this streams being a good way to be a monetary source for myself, right? So let's plan something for that too. So we would talk about that, but for now, let me just I don't know, like fucking go to washroom and shit. Bye.
Wait, by the way, I got a new YouTube video to for you guys to watch. Okay, just for a refreshment. This made my fucking day. ये क्या झारखंड प्रोटेस्ट में पहुंच गया क्या? एक सेकंड. लाल टोपी वाला. Okay, damn. Okay, she's getting way too many interviews for my likeness. Like, for my liking. Sorry, likeness nahi. For my liking. She's getting way too many interviews for my liking. Okay. Ah, God. Okay, yeah. Wait. I came back to the lab one day and said, hey, what do you think about starting an OnlyFans account? One of my graduate students is like, yes. And someone else is like, and I think it was Emily who said, only marms. And we all laughed. Our goal really is not to sexualize the marmots. It's to celebrate the marmots and show people what our day-to-day life is like when we're in the field looking at marmots. But even better, we're up close and personal. We're usually watching marmots from far away with binoculars and telescopes. And by getting up close and personal, you really sort of see what they're doing and occasionally even hear what they're doing. Apparently, I didn't pass the age verification because even though I held up my license on both sides and took a picture of myself, the image we had posted was of a marmot, not me. And Yeah, of course. they said, you have to get everyone age verified. So I thought for a couple of days, and then I went back and emailed them and said, well, we're never going to be able to age verify these guys. This is a novel way of getting money to support scientific research. Wait, and these are marmots. we're And not. then eventually they approved it. And we Come on. You really had to give the spicy content here? posting slowly ever since. Okay. Wait. Stop. Since. And these are marmots. And then eventually they approved it. And we've been posting This slowly guy is ever absolutely since. in the cuck chair, okay? After seeing so many depressing shit, this kind of made my day, okay? Fuck. Damn. Damn. Okay. Should I watch like Neha Vora's interview a little bit? Or should we like I don't know, man. You just ordered from Myntra. Congrats. Oh no, I cannot watch Indian Express. They will fucking copyright strike me.
रंगोली बना के आप कहते क्या कर सबने लेंगे? सब तो लेफ्ट ने किया था, उधर सीजेपी वाले कहेंगे अरे भाई हमने किया। सवाल और है इस पे कि सौरभ दास और आशुतोष मिले जाते थे जेपी नड्डा से, भाई बैठ रही थी नेहा 23 दिन से, अमीन बैठ रहे हैं 23 दिन से, वो नहीं जा रहे हैं मिलने के लिए, 2 लोग जा रहे हैं। पहली बार तो जो मीटिंग हुई थी 20 को, उसके बारे में हमें नहीं मालूम था, वो कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाया था बहुत ज़्यादा केओस वगैरह की वजह से, और हमें नहीं मालूम था कि वो गए हैं जेपी नड्डा से मिलने। और I don't understand this like quaint guy. Why is he throwing shit towards CJP? Like, bro, chill. क्या बात होगी? फैमिली में क्या, फैमिली का झुकाव किधर है, राइट लेफ्ट क्या है, फैमिली में क्या होता है? फैमिली राइट विंग ही है, सपोर्ट Damn. की। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है कि जिनके साथ आप बैठी थी सोनम वांगचुक के, सोनम वांगचुक और उनकी वाइफ का जो इंक्लिनेशन है राइट की तरफ दिखा है, उनकी वाइफ का जो स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पहले आया है, हिंदुत्व की बातें की है, हिंदू राष्ट्र की बातें की है, उनसे ऑफ कोर्स हमारा डिसएग्रीमेंट है। एनईपी को भी लेकर के मैं जानती हूँ सोनम वांगचुक सपोर्टिव हैं, हम बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। तो अब बताइए कि नेहा बोरा चुनाव लड़ेंगी, पॉलिटिक्स में आएंगी, लोगों के मन में एक ट्रस्ट डिफिसिट कह लीजिए। She seems young. What's her age? Damn, 25 to 29. She's like 6 years older than me. Because 97, right? 28, kind of. I mean, she's old enough for politics, I guess. Okay. ट्रस्ट का इशू है, नए भाषण देने वाले यंग लोगों, राघव चड्ढा हूँ, शायनी घोष हूँ, बड़ा वोकल थे, सरकार के खिलाफ बोलते थे, लेकिन उनका जो यू टर्न पलटना, तो जिस दिन मैं ये गद्दारी करूंगी उस दिन मैं रेलेवेंट हो जाऊंगी। नेहा के बीजेपी वाले दोस्त हैं, कोई आरएसएस वाले दोस्त हैं, एबीवीपी के एक्टिविस्ट्स हैं जिनको जब कुछ समझ नहीं आता है तो वो बिल्कुल मैसेज करके पूछते हैं। आदाब, मैं हूं शादाब, आप देख रहे हैं द क्विंट। और कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन था जंतर मंतर पर, वो समाप्त हो चुका है, बहुत लोग घर गए, पार्टी किया बहुत लोगों ने, और बहुत लोग अभी भी आंदोलन मोड में हैं। और जेंजी का टाइम है, तो हमारे साथ जेंजी समाज की बैडी हैं, नेहा बोरा हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया। Okay, we should stop overusing Gen Z terms, okay? Like, stop. स्टूडेंट एसोसिएशन। At this point, it looks like fucking cultural inappropriation type shit, bro. I'm pretty sure like the baddie word comes from like some American, African American like lingo, no? Like, I guess like that's a cool word to use, I guess, but come on, like, let's not overuse it, okay? आयसा की प्रेसिडेंट है इंडिया की, और कह सकते हैं कि आंदोलन जीवी गैंग की एक मेंबर भी हैं, फ्रेशर हैं। जनाब ऐसे कैसे हमारा एक शो है, और हम उसमें बहुत सीरियस बातें भी करते हैं, थोड़ा लाइट बातें भी करते हैं। अब एक बात बताइए, आप 23 दिन तक हंगर स्ट्राइक पर थी नीट के पेपर लीक के ख़िलाफ़। अब जो है कई सारे लोग कहते हैं कि भाई लोग घर में नाराज़ होते हैं, ठीक है, और उसके बाद कहते हैं खाना नहीं खाएंगे अगर मुझे खिलौना नहीं दिलाओगे, साइकिल नहीं दिलाओगे। तो ऐसा क्या था, हंगर स्ट्राइक पर बैठ के भाई हमको तो चाहिए, इस्तीफ़ा मांग लिया। अब घर वाले लोग तो घर वाले लोग होते हैं। मोदी जी अगर घर वालों जैसा सलूक हमारे साथ करते तो 20 तारीख को इतना मारपीट नहीं होता। खैर, पर खाने के साथ ऐसे बदला हमने कभी नहीं निकाला है, ये पहली बार है। सब कुछ हो चुका था, काला झंडा दिखाया जा चुके थे, न जाने कितने चार्जशीट्स हैं, तिहार जा चुके थे, तो एक ये बच रहा था, इसको भी कर लिया। ये हंगर स्ट्राइक खुद से प्लान था, अपनी जिद थी, या आयसा वालों ने कहा कि अरे तुमको बैठना है, तुम प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे पास जिम्मेदारी है? नहीं, ये जिद तो सोनम वांगचुक की थी मुझे लगता है, और उनके साथ स्टूडेंट्स भी बैठे, यंग लोग भी बैठे, उन्हीं का मूवमेंट है, वो लोग भी भूखे रहें, ये एक था। और बाकी मेरी जिद तो बिल्कुल नहीं थी कि मैं बैठूं। आमीन थे जो मेरे साथ 23 दिन तक बैठे, वो चाह रहे थे, उनका वॉलंटियर करना था कि हम बैठेंगे, मैंने वॉलंटियर नहीं किया था, ये प्रपोज हुआ था और मीटिंग में पास हुआ तो फिर हम बैठे थे। हंगर स्ट्राइक में होता क्या है, हम लोग तो रोज़ा रखते हैं, बहुत लोग व्रत रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भूखे रहना पड़ता है एक सर्टेन टाइम के लिए, लेकिन हंगर स्ट्राइक में बहुत लंबा चला आता है। होता क्या है एग्जैक्टली, क्या फील करते हैं, सबसे मुश्किल क्या होता है? आई थिंक हमारे लिए सबसे मुश्किल ये था कि हम एक पब्लिक प्लेस पे हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, जहाँ पे दिन के आई थिंक 10 नहीं तो 12 घंटा माइक चलता था, और उस माइक से न जाने दुष्यंत कुमार को हर रोज़ 3 बार तो पढ़ ही देते थे लोग
कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी। इतना पसंद था मुझे वो, लेकिन अब इतना ज़्यादा सुन लिया और इतने तकलीफ़ के क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस से वो कनेक्ट हो चुका है कि अब लगता है कि और नहीं सुनना है। भूख हड़ताल मानसिक रूप से बहुत टायरिंग थी हमारे लिए, क्योंकि हम लोग सराउंडेड थे। मतलब अगर हमें प्रिक किया जा रहा है ब्लड शुगर लेने के लिए तो वो भी 10 लोग बैठ करके देख रहे हैं, सबको रीडिंग देखना है। यहाँ से खून 3-3 वाइल हर ऑल्टरनेट डे लिया जाता था, वो सबको देखना है। हम वेइंग मशीन पे चढ़ते थे कि कितना वज़न कम हुआ, तो सब ऐसे रुक जाते थे और आसपास ऐसे गोला बना लेते थे कि कितना वज़न कम हुआ है। तो अपने बॉडी का एहसास बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ। और मुझे लगता है कि हमारा बॉडी, हमारा सोने का समय, क्योंकि हम सोते भी वहीं बिस्तर पे थे, तो एवरीथिंग बिकेम वेरी पब्लिक। सब कुछ बहुत ज़्यादा सार्वजनिक हो गया। मैंने ईसीजी करवाया 3 बार जंतर मंतर पे बैठ करके। मतलब ईसीजी में वो आपके कपड़े खोल करके वो प्लग इन करते हैं, वो भी जंतर मंतर पे हो गया। मतलब अद्भुत दिन थे। सोशल मीडिया पे कई सारे लोग कह रहे हैं जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो एक वीडियो आप लोगों किया, आप लोग डांस कर रहे हैं और चल छैया छैया, काफ़ी लोग उसमें हाथ पिकिंग किए, और फिर तो वो जो है उसमें बार बार कहा जा रहा है यार ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, तो डांस कर रहे हैं। एक पूरा बहस चल रहा है सोशल मीडिया पे कि देखो ये लोग तो डांस कर रहे हैं, इनको मतलब नहीं है, इतने बच्चे मरे थे, इतने लोग घायल हैं, इतने लोग जेल में हैं। उसको किस तरह से आप देखते हो? नहीं, ये सही बात है कि बहुत सारे लोग जेल में हैं। उनसे मिलने के लिए भी हम लोग पटना गए और अभी भी हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बंगाल में भी उन स्टूडेंट्स की सहायता कर रहे हैं। ये सही बात है कि अभी मूवमेंट अधूरा है, लेकिन इस मूवमेंट में जितना खून जला है हमारा, जितनी मेहनत, आंसू, न जाने क्या क्या लगा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा कोई सामान्य बात नहीं है। और जब आपके सामने जो ताकतें हैं वो इतनी ज़ोरदार, ज़िद्दी, घमंडी ताकतें हों और आप उन ताकतों को झुका दें, तो मुझे नहीं लगता है कि आधा 1 घंटा नाच लेने से कुछ होता है। ये तो बिल्कुल करना चाहिए, स्पेशली जब आपका खुश रहना रजीम को नागवार गुजरे, तो आप और खुश रहिए। आपको धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा हो गया, पार्लियामेंट में आने पे धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उनको न जाने क्या क्या पहनाया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। तो अपने अना पे जो चोट लगी है उसको कवर अप करने की बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन आपकी अना पे जो चोट है उसको तो हम छैया छैया से भी, झकझोर दुनिया से भी, सब पे नाच करके दर्ज करवाएंगे कि नहीं, तुम तो हारे हो और तुम्हारे लिए हार कोई छोटी बात नहीं है। हमें मालूम है खून का घूंट पिया है तुमने, और इस खून के घूंट पीने, मतलब हम इतने सालों से पी रहे हैं खून का घूंट, एक बार तुम भी पियो और हम भी मनाएं, क्या दिक्कत है? अब एक बात बताइए कि जैसे हंगर स्ट्राइक पर आप लोग भी थे और सोनम वांगचुक भी बैठे थे, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली, क्योंकि हम लोगों ने कवर किया, तो जो सेंटर स्टेज था उसमें सोनम वांगचुक थे और उस सेंटर स्टेज पे सौरभ दास और अभिजीत, दीपिके, आशुतोष, इन लोगों की टीम और ये लोग थे। आप लोगों का एक अलग एरिया में आप लोग वो कर रहे थे, तो क्या कोई ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप लोग अलग थे, या कोई मतलब पहले से सेट था कि हाँ हम अलग रहेंगे, या साथ बैठने के लिए कभी कोई बात हुई थी? पहले तो ये डिसाइड ही नहीं हुआ था कि स्टूडेंट्स लोग भी बैठेंगे। सोनम वांगचुक के साथ बातचीत हुई होगी सीजेपी स्पोक्स पर्सन्स की, तो एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने हमें बताया कि वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमने उस मीटिंग में भी कहा कि यंग लोगों का प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स भी बैठे, लेकिन उसमें फिर वो और खिंच गया था वो मीटिंग। उसके बाद एक और मीटिंग होनी थी, लेकिन तब तक फिर वो दिन आ गया था जिस दिन से सोनम वांगचुक बैठते भूख हड़ताल पे। तो हम लोगों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग किया और हम 6 लोगों ने डिसाइड किया कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अब वो सीजेपी की तरफ से बैठे हुए थे भूख हड़ताल पे सोनम जी, हम आयसा के एक्टिविस्ट थे जो बैठे थे, और उसमें शायद कुछ लॉजिस्टिकल मामला भी था, इन्फेक्शंस, और एक उनको आदत थी एक तरह से बैठने की। तो हमने कहा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम आयसा के स्टॉल पे बैठ जाएंगे, आयसा के टेंट पे प्रोटेस्ट पे बैठ जाएंगे, बैठना भूख हड़ताल पे ही है, कोई। Okay, let me go for 2 minutes, okay? I cannot sit for more than fucking 5 minutes in a place, okay? I'm having a bad leg cramp right now, and it's kind of ironic. I'm hearing this guy is like not eating for like days in a place and struggling there, and I'm in my room listening to that and complaining about my leg cramps or whatever. Also, I'm hungry, okay? It's kind of ironic, but hey, it is what it is. I have the privilege to do it anyway. Yeah.
दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा है कि दोनों में ना मतलब फ़र्क था कि जो इसको गलत वर्ड ही कहते हैं लाइमलाइट, ठीक है, वो पूरा फोकस जो था वो वहाँ था, उस सेंटर स्टेज पे था, लेकिन आप लोग भी प्रोटेस्ट पे थे। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि वो एक नाइंसाफ़ी टाइप है कि आप लोगों को वो सेंटर स्टेज नहीं मिला? क्योंकि लिए मैंने देखा है कि जब I mean, to be honest, like people came for CJP, people came for Sonam Wangchuk, people came for Abhijit Dipke, people came for Saurav Das, and people came for the CJP protest, right? Like, again, the left movement was there, standing as a backbone and helping in different things, sure. But it was not really a left-led movement, rather left was another arm of the movement, I guess. So it is what it is. वांगचुक को पुलिस ने उठाया था, उसके बाद आप लोग वापस स्टेज पे आए थे और फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस आप लोग स्टेज से हट गए, तो वो मुझे समझ में नहीं आया वो हुआ क्या था वहाँ पे। अब वही है, प्रोटेस्ट साइट्स बहुत कंफ्यूजन का भी साइट होता है। और देखिए मतलब इम्पॉर्टेंट बात वो है क्योंकि जो लोग पूछ रहे हैं वो कंसर्न से ही पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम चाहते थे आप भी बैठे हैं स्टेज पे, वो लोग ये चाहते हैं, इस वजह से ज़्यादातर लोग हमसे पूछ रहे हैं। तो यार लेफ्ट से एसोसिएट नहीं करना चाह रहे थे बहुत ज़्यादा ये लोग। ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा भी है तो। खैर Well, to be honest, like, if that's even the case, like, that's not really surprising, right? Like, if they got attached with the label of being a leftist or whatever, it would have been easier for the regime to disqualify them more, right? Which is, again, not to say that being leftist is bad or something like that. I'd argue that this might have been opportunity for the movement to promote more liberal and leftish ideas. But it's a bet that they chose and their bet paid off. Like, they succeeded. And yeah, the left movement too succeeded. They joined, they had their face, they struggled, and they're getting interviews. I mean, I don't think anybody lost from this, but yeah, it is what it is. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ हो या स्टेज पे संभालना हो, सब तो लेफ्ट ने ही किया था, तो इस और कितना दूरी बना के तो सब तो लेफ्ट ने किया था, उधर सीजेपी वाले कहेंगे अरे भाई हमने किया नहीं, मतलब लेफ्ट के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और सीजेपी सबने साथ में ही किया, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है मुझे लगता है। Also, I don't understand the Quint guy. Why is he trying to like he is like the bro. Fuck, I don't remember the name of the interviewer. कौन रफ्तार को पूछा था कि एमयूए पैसा कमा रहा है कि नहीं, उसके बाद एमयूए ने एमयूए पैसा कमा रहा इंटरव्यू। What's the name of the Raj Jones, right? Raj Jones. Yeah. Yeah, this Quint guy, I'm sorry. This Quint guy is being Raj Jones here, okay? He's trying to create like a MUA Bantai versus Raftar scene here. Like, no reason he's creating the feud between them and CJP, but yeah, I guess that's what interviewers do. यहाँ 23 दिन से अमीन बैठ रहे हैं, 23 दिन से मनीष बैठ रहे हैं, ये सारे लोग बैठे हुए और भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे, वो नहीं जा रहे हैं मिलने के लिए, 2 लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा तो लगता है ना। तो आप लोग को ऑर्गेनाइजर्स से बात करना चाहिए था पहले. आई एम टॉकिंग अबाउट देम. ऑल्सो देयर माइट बी सो मच chaos and shit, like CJP का जो भी मेन ऑर्गेनाइजेशन, I didn't even understand like what was the organizational structure or what was the process they were using to hire people in their core members of the organization or whatever. Who knows? There are many strategic bets that they took, that they placed during the protest. Some paid off, some didn't. They could have leveraged some more power and promoted certain liberal, secularish ideas or even progressive ideas maybe.
but what happened at this point, who cares? यार इतना प्रोटेस्ट में जो जिसका हाँ, तुम राज जोन्स बनते रहो दोस्त, तुम राज जोन्स बनते रहो, ठीक है, एमवे बंटाई और रफ्तार का लड़ाई कराते रहो। बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, मैनेज करना भी एक बड़ा वैल्यू रखता है, लेकिन उन लोगों को मीटिंग में नहीं लेके जा रहे हैं। तो ये आप लोगों से कोई तालमेल, कोई बातें हुई थी कि हाँ चलो करते हैं, आप लोग चलो, या आप लोग नहीं जाओगे, या खुद हम चले गए? नहीं, पहली बार तो जो मीटिंग हुई थी 20 को, उसके बारे में हमें नहीं मालूम था, वो कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाया था बहुत ज़्यादा केओस वगैरह की वजह से, और हमें नहीं मालूम था कि वो गए हैं जेपी डंडा से मिलने और गए हैं तो क्या बात होगी, वो हमें नहीं मालूम था। दूसरी बार जब मीटिंग के लिए बुलाया था तो उसके पहले हमारी मीटिंग हुई थी कि क्या बात रखनी है क्या नहीं रखनी है। अब सरकार के रिप्रेजेंटेटिव की भी एक अपनी होती है डिमांड कि हम इनसे मिलेंगे, इतने लोगों से मिलेंगे, तो वो सब लॉजिस्टिकल बात था। पर जो ये बात है कि स्टेज पे नहीं बैठे या तमाम चीज़ें, मुझे तो लगता है कि अगर हम स्टेज पे बैठे तो हम सोनम वांगचुक के साथ उठ चुके होते हैं उस वक्त। और दूसरा ये कि लोगों को ये लग रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं लग रहा कि मूवमेंट में जितना लोग आपको जानना चाहिए था, आपके संघर्ष को अप्रिशिएट करना था, वो नहीं हो रहा है। उससे हमारा बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। हमें लगता है कि जिस जगह पे हम बैठे हुए थे, एक तो वो ऐसी जगह थी जहाँ पे सब लोग आते जाते रहते थे, बाद में तो वहाँ पे चलिए रस्सी लग गई, उससे पहले रस्सी भी नहीं लगी थी। तो हम लोगों का खून निकल रहा है तो हम कौन सा एक्सप्रेशन बना रहे हैं, ये जनता एकदम करीब से देख रही है। हमारा वेट किस तरह से गिर रहा है, वो मशीन के ऊपर ऑलमोस्ट चढ़ के वो सब लोग देख रहे हैं। हम लोगों का समथिंग इतना इंटीमेट कि हम जब यूरिन टेस्ट हमको हमारा लिया जा रहा है तो हम लोग वो डब्बा लेकर के वॉशरूम जाते थे और वॉशरूम से वापस फिर आके हम देते थे उनको जो कलेक्ट करने आते थे। और ये मैं बता भी रही थी किसी को, तो हम लोग जब एक दिन लेकर के आ रहे थे, पहले मुझसे पहले 2 साथी गए थे, तो मैं तीसरी इंसान थी जो वॉशरूम से ले के निकल रही थी वो डब्बा। तो लोग पीछे बात कर रहे थे कि ये लोग कर्ज कैसे लेते हैं, कि ऑन डिमांड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर किसी दिन नहीं हुआ तो क्या होगा, सरकार मानेगी नहीं क्या ये लोग बैठे हैं। तो लोग हमारे यूरिन टेस्ट को डिस्कस कर रहे थे क्योंकि वो ऐसा जगह होता है। हमारे खून निकलता था यहाँ से एवरी ऑल्टरनेट डे, 2-3 वाइल्स लिए जाता था। तो हमारा वीडियो हमारे लोग बाद में बनाते थे, बाकी जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्टर्स थे वो पहले बना देते थे। देखिए कितनी तकलीफ हो रही है नेहा जी को, और हम देखते थे कि अच्छा ये इतने सारे एंगल से हमारा वीडियो बना है। तो द फैक्ट कि हमारा संघर्ष लोगों के जहन में दर्ज है, उनके जंतर मंतर के मेमोरीज का एक अभिन्न अंग की तरह हमारा मेडिकल टेस्ट, हमारे साथ बैठ करके फूट फूट के रोना, हमसे माफ़ी मांगना भाजपा को वोट करने के लिए, हमें फूल देना, मुझे पता नहीं वो प्रोटेक्शन का धागा वादा सब बांध देना, और तमाम हमको सजेशंस देना, बोलना कि अब SIR पे अब आप करो, ये सब हो गया है एजुकेशन पे। कुछ रिटायर्ड लॉयर आए, वो अपनी कहानियाँ सुनाने लग गए पता नहीं कितने साल पहले। तो ये सब तमाम चीज़ें हुई। मेरी माँ आई जो भाजपा की सपोर्टर रही हैं, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्होंने बोला सबको बधाई देना, तो मुझे लगा सबके माँ बाप, अब नहीं सपोर्टर, छोड़ दिया उन्होंने। अब पता नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में उन्होंने बधाई दी, बाकी देखा जाएगा लंबी। आप कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड से हूँ। मतलब आपके फादर मदर क्या करते हैं? मेरे फादर आर्मी में हैं, मदर एक हाउसवाइफ है, भाई है एक मेरा छोटा जिससे मैं बहुत क्लोज़ हूँ। तो हम लोग मूव करते रहे हैं हर 2 साल बाद पढ़ाई के लिए, यही रही है हमारी ज़िंदगी ऐसे। तो अभी जो है फैमिली में क्या, फैमिली का झुकाव किधर है, राइट लेफ्ट क्या है, फैमिली में क्या होता है? फैमिली राइट विंग ही है, सपोर्टर है वो बीजेपी की। अब इन प्रोटेस्ट्स में जो हमारा 22वां दिन था भूख हड़ताल का 19 तारीख को, उस दिन मेरी मम्मी आई थी, तो उन्होंने देखा, और वो जिन लोगों से इतना डिसएग्री करती हैं पॉलिटिकली, उन लोगों को देखा कि वो उनकी बेटी का पैर दबा रहे हैं, खाना भी खिला दे रहे हैं, सॉरी पानी पिला दे रहे हैं, अगर वॉशरूम ले जाना है तो 7-8 लोग साथ में चल रहे हैं। अभी रील कट जाएगी। हाँ, खाना खिलाया। Are you stuck in what I call the intelligence trap? जब आपकी इंटेलेक्ट बहुत तेज होती है, तो वॉशरूम ले जा रहे हैं 7-8 लोग। तो नेहा बोरा का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? परिवार राइट की तरफ, नेहा लेफ्ट की तरफ? नहीं, मेरा हृदय परिवर्तन बहुत पहले हो गया था। मैं जब स्कूल में ही थी 10वीं 11वीं क्लास में आई थिंक, तभी मेरा हृदय परिवर्तन तो हो चुका था। और उसके लिए अब परिवार में आप जो देखते हैं, अब होते हैं यंग लोग बहुत रिबेलियस होते हैं, जाने जाते हैं यंग लोग रिबेलियस होने के लिए। तो जो डिसएग्रीमेंट्स समाज से रहे होंगे, स्कूल में टीचर से रहे होंगे, घर में परिवार वालों से रहे होंगे, उस डिसएग्रीमेंट का आर्टिकुलेशन मुझे
मज़ेदार बात है, लेफ़्ट के ही पोएट्स राइटर्स से पहले मिला। सबसे पहला मेरा कांटेक्ट ऐसे ही लेफ़्ट के ही राइटर्स से हुआ, चाहे वो पाब्लो नेरूदा हो या अरुंधति रॉय हो या आगा शाहिद अली हो, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। बस अरुंधति राय का नाम लिया, कॉन्फ्लिक्ट शुरू। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट शुरू कह सकते हैं, जबकि वो बहुत खूबसूरत लिखती हैं। फिर मैं यूनिवर्सिटी में आई तो वहाँ मैं थिएटर कर रही थी, मैंने थिएटर शुरू किया। थिएटर ग्रुप एक चलता था, पॉलिटिकल थिएटर ग्रुप, उसमें मैं जुड़ी। और उसके बाद फिर आई थिंक थिएटर से जो लोग राजनीति में आते हैं उनके लिए ज़िंदगी में राजनीति को उतारना, मुझे ऐसा लगता है, ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए उसके बाद फिर 2019 का आंदोलन सबने देखा, इक्वल सिटीजनशिप वाला, जिसमें स्टूडेंट्स ने ही लीड लिया। और आई थिंक जिन्होंने वो आंदोलन देखा मेरे जहन में, तो उन्होंने, वो लोग उस आंदोलन की वजह से बदल गए ज़िंदगी के लिए। मैं अगर एक्टिविज़म कर रही हूँ तो मेरे ऊपर कर्ज है उस आंदोलन का। गौर से देख लीजिए इस शख्स को, इसके चेहरे को देख लीजिए, इसको जो है सीए प्रोटेस्ट ने बदल दिया, ब्रेन वॉश किया है। मैं समझ रहा हूँ, ये थिएटर ने ब्रेन वॉश किया है। थिएटर ने, हाँ कह सकते हैं। अब एक बात बताइए, आपने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि नए लोग सोचते हैं और फैमिली से कि अगेंस्ट कह सकते हैं आपकी सोच, विचारधारा, आइडियोलॉजी है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है कि जिनके साथ आप बैठी थी, स्टेज तो अलग था सोनम वांगचुक और उनकी वाइफ का जो इंक्लिनेशन है वो कई बार दिखा है, राइट की तरफ दिखा है। उनकी वाइफ का जो स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पहले आया है कि जिस तरह की उन्होंने बातें की है, हिंदुत्व की बातें की है, हिंदू राष्ट्र की बातें की है, उससे आपको लगता है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है या आपकी विचारधारा से अलग है? नहीं, ऑफ कोर्स अलग है। हमारी और उनकी राजनीति में बहुत फ़र्क है। वी वर यूनाइटेड बाय वन एजेंडा कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन उसके इतर जो उनके शायद राजनीतिक व्यूज़ हैं, खुद सोनम वांगचुक के हो सकते हैं या उनके पार्टनर गीतांजलि जी के हो सकते हैं, उनसे ऑफ कोर्स हमारा डिसएग्रीमेंट है। एनईपी को भी लेकर के मैं जानती हूँ सोनम वांगचुक सपोर्टिव हैं, हम बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। हमें लगता है कि अगर इस पूरे एजुकेशन वांगचुक सपोर्टिव हैं, हम उनसे ऑफ कोर्स हमारा डिसएग्रीमेंट है। एनईपी को भी लेकर के मैं जानती हूँ सोनम वांगचुक। एनईपी व्हाट इज एनईपी? नेशनल एजुकेशन समथिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ओके। इट्स अ comprehensive framework introduced by the government of India in 2020 to overhaul and modernize the country's school and higher education system. It replaces 1986 policies with a focus of holistic, flexible and based learning. The future of school education 5+3+3+4 structure replaces the 10+2 system that covers ages from 3 to 18, split into foundational, preparatory, middle and secondary stages. Okay. मतलब 10+2 मतलब है कि हाई स्कूल प्लस हायर सेकेंडरी जैसे था, यहाँ पर 5th तक एक कोई कोर्स था रहेगा, उसके बाद 8th तक रहेगा, उसके बाद 11th तक रहेगा, उसके बाद आई डोंट नो व्हाट द फक इज +4 इज। मदर टंग फोकस encourages teaching in the local languages or mother tongue up to at least grade 5, and vocational training introduces practical skills and internships starting in grade 6. Okay. सपोर्टिव हैं, हम बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। हमें लगता है कि अगर इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन के सिस्टम में कोई एक रॉट की मेन वजह आज के समय में है तो वो एनईपी है। इसलिए भी हम लोग एक्चुअली बैठे थे भूख हड़ताल पे कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, हम आपके साथ सॉलिडारिटी में बैठे हैं, लेकिन एनईपी के समर्थन की आवाज़ अगर आप उठाएंगे तो उसके साथ साथ छात्रों का भी ये डिसेंट दर्ज होना चाहिए कि एनईपी किस तरीके से हमारे यूनिवर्सिटीज़ को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और उनकी लार्जर पॉलिटिक्स से अलग अलग समय पे हमारा डिसएग्रीमेंट रहा है। हम एक लेफ़्ट का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वो लेफ़्ट का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट मौजूदा राजनीति को कैसे देखता है, उसमें हिंदू राष्ट्र का जो तात्पर्य आज के समय में आ गया है कि उसका मतलब ये होगा कि बाकी और किसी के लिए जगह नहीं होगी, चाहे वो दलित हो गए, महिलाएं हो गए, मुसलमान हो गए, किसी और के लिए स्पेस नहीं होगा इस हिंदू राष्ट्र में। ये समझदारी से हम डिसएग्री करते हैं। हमारी अम्बेडकर की समझदारी है और वो हिंदू राष्ट्र के प्रति जो वार्निंग देते हैं हम उससे इत्तेफाक रखते हैं। हम भगत सिंह के जो एंटी कम्युनल एजेंडा है और जो वो मानते हैं कि एक डायरेक्शन में एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ग्रुप नहीं चला सकता है स्टेट के ऊपर।
these are things I agree, but I don't know what's the way to message about it. Is the way to message about it is like you create some like goodwill among the people doing regular protests against the government, then you build some coalition from there, and then you start pushing your ideas. Like, I don't know, how do you like make the, like, I would say the right wing Hindu population like like concede with the fact that maybe their active role, maybe their passive role has been like a big part of the like marginalization of minorities and different group of people in India. Like, I don't know what's the way to make them like stand in solidarity with these causes. I don't know what's the way to message these things. Like, my fear is, I don't know, I'll say fear, my thing is that like BJP might go away in a few years is the best case scenario. The worst case scenario is like the BJP uses the rage of people against the opposition parties, and BJP is somehow doing party breaking and shit like that, and ED, CBI and shit like that by suppressing dissent using state police and stuff like that, like somehow manages to stay in power. That's the worst case scenario. But even in the best case scenario where BJP loses, what is the way to make these ideas lose, or make the ideas that she's talking about win in the long run, I guess? सत्ता में नहीं रह सकता है, उससे इत्तेफाक रखते हैं, तो यही बात है। तो अब बताइए कि नेहा बोरा चुनाव लड़ेंगी, पॉलिटिक्स में आएंगी? बिल्कुल, जहाँ से हमारी पार्टी हमें बोलेगी हम लड़ेंगे चुनाव। ये हुई ना बात। एक बात बताइए, आप चुनाव लड़ेंगी, कहीं सोचा है कुछ सीट वीट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा, अभी बहुत समय है हमारे चुनाव लड़ने में। और मतलब चुनाव लड़ना या किसी भी पॉलिटिकल इलेक्टोरल कंपटीशन का हिस्सा बनना इज़ अ मीन्स टू एन एंड। जिस तरीके से सड़क का संघर्ष होता है, उसी तरीके से संसद का संघर्ष होता है। तो अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, पार्टी बोलेगी, तो बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे पहले भी साथी लड़े हैं और बहुत अच्छा लड़े हैं। और अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हमें लड़ना है करके पार्टी छोड़ने का भी कोई विचार नहीं है, अगर ये कोई सवाल पूछे। लोगों के मन में एक ट्रस्ट डिफिसिट कह लीजिए, ट्रस्ट का इशू है। नए भाषण देने वाले यंग लोगों को देखने के बाद, राघव चड्ढा हूँ, शालिनी घोष हूँ, बड़ा वोकल थे, सरकार के खिलाफ बोलते थे, लेकिन उनका जो यू टर्न, पलटना, I mean, you can complain about that, but in the same place, like, people have voted for BJP for whatever reason. BJP might have manipulated by removing a fuck ton of people, like 10% of the population from the electoral rolls, but in the same place, there is a fuck ton of people who voted for BJP. I mean, end of the day, if BJP is winning in the ballots, like, can we really complain about them? Again, do not get me wrong, they are fucking traitors, okay? They are fucking traitors, not only to their home party, but also they are traitors to the fucking country. But, like, you cannot just solely, like, say people cannot trust young leaders because these young leaders changed. It might be the case that these young leaders changed. It can be because of money, it can be because of fear of retribution, it can also be because that people are moving right towards in different elections. Kerala mein, like, I think independence के बाद पहली बार कांग्रेस का सरकार आई है. That is like more right wing than the CPM or CPIM, whatever was there in power. And Bengal, the stronghold of secular and liberal ideas, fell to BJP for whatever reason. You can talk shit about Mamata Banerjee as much as you want. Maybe people were frustrated with Mamata Banerjee, but for whatever reason, people did vote for BJP, and like that might be a contributing factor for why Sayoni Ghosh and other
MPs are switching to BJP. I mean, I'm not excusing their act, but maybe it is understandable, I guess. तो लोगों को ना एक डर है नेहा, तो आपसे भी लोग ये सोचते पूछते होंगे या आपके दिमाग में भी बातें चलती होंगी कि नेहा आज तो बहुत भाषण दे रही है, आपके ही जेएनयू से शहला रशीद थी, आज कहाँ हैं, आज उनका स्टैंड क्या है, वो बहुत क्लियर है। नेहा क्या सोचती हैं इसके ऊपर? नहीं, मुझे लगता है कि आप जो राजनीति करते हैं उसके हिसाब से जो लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे या आपका समर्थन करेंगे। जिस दिन कोई भी, एंड दिस अप्लाइज फॉर एनीबडी, जिस दिन लोग खुद को जनता के संघर्षों के लिए इरेलेवेंट बना देते हैं, उस दिन वो लोग जनता के लिए इरेलेवेंट हो जाते हैं। भले ही वो सत्ता पक्ष के कितने पैर पकड़ें, नतमस्तक हो जाएं उसके सामने, तो जिस दिन मैं ये गद्दारी करूंगी उस दिन मैं इरेलेवेंट हो जाऊंगी। नेहा भी कह रही गद्दारी। हाँ, गद्दारी होगा और क्या होगा ये। काफ़ी लोगों ने ऐसा भाषण दिया है, ये वाला नेहा, इस तरह के बोल्ड भाषण, हाँ। और फिर वो पलट गए हैं। नेहा के बीजेपी वाले दोस्त हैं, कोई आरएसएस वाले दोस्त हैं? हाँ, जानने वाले हैं, बातचीत है। एबी Sorry, I'm shamelessly या अपने खाना बैठा के आए, उसके बाद पापा को बोले कि हो जाए तो आप उतार देना एंड जस्ट give me the food. Okay, I'm sorry. My hungry ass cannot withstand without eating food while talking. के एक्टिविस्ट्स हैं जिनको जब कुछ समझ नहीं आता है तो वो बिल्कुल मैसेज करके पूछते हैं कि ये वाला तो समझ नहीं आया, नेहा दीदी आप ऐसा बोल रही थी, इसका क्या मतलब है लोग हैं। लेकिन अब यही बात है कि कोई व्यक्ति सत्ता पक्ष के प्रति कितना ज़्यादा लॉयल है उससे, और वो किस हद तक अपनी ज़िंदगी में उस नफ़रत को उतारने के लिए तैयार है, ऑफ कोर्स इसका एक इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, कैंपसेस में मैं जिन लोगों से बात करती हूँ, अपनी आम ज़िंदगी में जिन लोगों से बात करती हूँ, जो लोग मेरे दोस्त हैं, उन लोगों का वो देखते हैं लोग, और इस वजह से भी उनका एक्सेस, मतलब आम लोगों का एक्सेस उन तक ना पहुँचे, ये भी एक पक्के वाले दोस्त नहीं है कोई। पक्के वाले तो अब परिवार वाले भाजपा वाले हैं, और कितने पक्के वाले होंगे। एक चीज़ चल रहा है अचानक, जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था इसी बीच में रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन टाइप की चीज़ें भी उठ रही हैं, तो आप देख रही होंगी। और आपको लेकर काफ़ी वो है कि आपने जब डीयू में कुछ प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें ब्राह्मणवाद और का नारा लगा था, उसमें आपके खिलाफ भी बहुत सारे लोगों ने कहा था। इस वाले आंदोलन या इस टाइप की चीज़ों पे आप क्या सोचते हो? रिजर्वेशन के ऊपर नेहा बोरा क्या सोचती हैं? जब यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस लाए गए थे, एक अधपके अधकच्चे से गाइडलाइंस लाए गए सरकार द्वारा, और उसके बाद
5 दिन के 5 लोगों के प्रोटेस्ट के बाद कोर्ट चला गया वो, और कोर्ट ने बोला कि इतने बड़ा डिसेंट आ रहा है तो हम लोग कैसे नाराज़ कर दें और पुख्ता नहीं है इसके डेफिनेशंस, तो हम वापस ले रहे हैं। उसके बाद पूरे देश भर में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में का मैं हिस्सा थी। आयसा मुझे लगता है उन कुछ चुनिंदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में से था जो इस बात को सड़कों पे उतार रहा था कि नहीं, हमारे कैंपसेस में जाति के आधार पे भेदभाव और हिंसा बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, और अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो कैंपसेस जो एक तरीके से अपना गेट बंद कर देते थे समाज के हाशिए से आने वाले जाति के लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, वो पूरा प्रोसेस, वो ट्रेडिशन कंटिन्यू रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ आरक्षण को लेकर के नहीं, मतलब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के और हिंसा को लेकर के पुख्ता कानून बने, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि जो आरक्षण का वादा सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो और एजुकेशनल बैकवर्ड। This is a thing. I sometimes feel that I will talk about it. Maybe today is the time we'll talk about it. We'll talk about it, okay? Because मैं जब भी स्ट्रीम करने बैठता हूँ मैं सोचता हूँ कि इसको लेके पहले नोट्स बना के आएंगे नेक्स्ट स्ट्रीम के लिए, बट उसके बाद जब भी नोट्स बनाने का बात आता है, आई हैव फक टन ऑफ अदर लाइक वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी टाइप ऑफ वर्क, एंड ऑल्सो मेरा खुद का नहीं, मतलब मेरा कुछ दोस्त मिलके हम लोग एक मीडिया टीम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। वेल, I'm a part of the team, that's what I can say. I'm not leading the team in any way, size, shape or form. And the person जिसके लिए फंडिंग्स आ रहे हैं, like they generally control the bigger share of whatever, right? I'm not gonna bitch about that. It's generally the thing is मेरे खुद के चैनल के लिए या खुद के मीडिया गोल्स के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, एंड एंड ऑफ द डे फिर से स्ट्रीम करने बैठते हैं, फिर से ये लगता है कि अभी बैठ के अगर मैनिफेस्टो टाइप का बनाए, दैट वुड बी लाइक अ फकिंग मेगा अनइंटरेस्टिंग थिंग टू डू, एंड या दैट्स दैट, राइट? एंड फिर से जब स्ट्रीम करते हैं सोचते हैं कि अगर कुछ नोट्स पहले बना लेते अच्छा होता, फिर से नोट्स बनाने के टाइम में लगता है कि नहीं, स्ट्रीम के टाइम में कर लेंगे। इट्स लाइक अ continuous perpetual cycle I've been living in for a few streams nowadays. की वजह से चिन्हित करते हुए आरक्षण मिलता है, ना सिर्फ उसको प्रॉपर तरीके से यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट जॉब्स में इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि आज भी हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो सीट्स निकलती हैं अभी भी SC ST OBC सीट्स खाली जाती हैं। जो प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त पढ़ा रहे हैं उसमें SC ST OBC सीट्स आप देखिए लगभग खाली हैं। तो ना सिर्फ आरक्षण ढंग से इम्प्लीमेंट हो, बल्कि आरक्षण का जो एक कैप है 50% का, कास्ट सेंसस अलग अलग जगह पे करवाया जाए, नेशन वाइड कास्ट सेंसस हो, और उसके बेसिस पे जो 50% की सीलिंग लगा दी गई है लोगों को अपने अधिकारों से वंचित करने के लिए, वो सीलिंग भी ध्वस्त हो। ये तो हमारा मानना है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोगों ने जेनजी ने ले लिया, जेनजी के अगले निशाने पे कौन है? जेनजी के निशाने पे तो पूरा कैबिनेट है। अमित शाह है फिलहाल सबसे ज़्यादा तीखे निशाने पे। वो व्यक्ति जो स्टार्टिंग में 20 तारीख को पैलेट गन्स इस्तेमाल करने का ऑर्डर लेते हैं, मुझे नहीं लगता हम 1 मिनट भी 1 सेकंड भी मानेंगे कि अमित शाह को के एक्सप्लिसिट परमिशन और ऑर्डर के बिना सेंट्रल दिल्ली में पैलेट्स फायर हुए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एंड वी डू नॉट बिलीव इन इट एंड वी डोंट एक्सेप्ट इट। अमित शाह इस देश में सेंट्रल दिल्ली में आम जनता, आम प्रोटेस्टर्स को हैंडल करने के लिए पैलेट गन्स के इस्तेमाल को आम बना देना चाहते हैं, और इस वजह से जिस स्टेट का वो हिस्सा है वो एक टेररिस्ट स्टेट है, वो एक क्रिमिनल स्टेट है, और उसमें उस क्रिमिनल स्टेट में जो व्यक्ति निर्देश देगा कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल करो, जिसके बाद आँख की रोशनी एक स्टूडेंट की परमानेंटली चली गई है, हियरिंग डैमेज हो गया है, स्टूडेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं, उन सब लोगों के ज़िंदगी को बर्बाद करने का, परमानेंटली डैमेज करने की जिम्मेदारी अमित शाह उठाएंगे, और उनके इस्तीफे की मांग सबसे पहले उठेगी। अब गुड जॉब, like subscribe to Quint if you want. That was a nice interview.
Okay. Oh, damn. There is a Arundhati Roy interview. This would be crazy to watch, but उसके पहले let me do something, okay? Let my food come, okay? उसके बाद हम लोग बात करेंगे. नहीं, let my food come, उसके बाद we'll have some talks, some notes, I guess. Hmm. Yep. I burnt you by mistake with a cigarette. And you looked at me and said, Chutiya. Okay. We'll watch this later. Okay. I'm having bad leg cramps. Okay, let's play chess for a while, okay? Then my food will come, then we'll talk, then fucking, I don't know, fuck. Today I'll try to reach 700 at least. Chalo. E4. Knight. Okay. 3 knights. 4 knights. Can we do this? Damn. Fuck, I fucked up this game, okay? Wait. Nice smell.
Oh shit, fuck. Did I lose it? Fuck it. I should live chairs. Okay. Oh, आकाश बनर्जी का न्यू वीडियो है. Okay, let's watch this while we eat, and then रिलायंस डिजिटल की इस हफ्ते भारत की संसद में कुछ ऐसा होता है जो शायद बीते 12 सालों में नहीं हुआ हो. एफसीआरए अमेंडमेंट बिल, जिसे बीते कुछ हफ्तों से सरकार पूरे शिद्दत से डिफेंड करती आई थी, ये कह के कि एफसीआरए अमेंडमेंट्स देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, विदेश से आ रहा पैसा उसे ज्यादा रेगुलेट करना बहुत जरूरी हो गया है. लेकिन फिर अचानक से इस क्रिटिकल अमेंडमेंट को जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाता है, वो भी बिना संसद में बहस के. वैसे तो जेपीसी को बिल्स रिफर करना कोई नई बात तो है नहीं. मोदी सरकार के आने से पहले भी स्टैंडिंग कमिटीज और जेपीसी को बिल भेजे जाते थे. पिछले 12 सालों में मोदी सरकार के राज में यह एक कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस बन गया है. यानी जिन कानूनों का खास तौर पर देश भर में विरोध होता है, उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी होती है, बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होता है, उन्हें जेपीसी में भेजा जाता है. जैसे कि 2024 का वक्फ बिल, 2016 का सीएए, और कभी कभी तो प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार जेपीसी का सहारा लेती है, जैसा कि फार्म लॉज और लेबर कोड के टाइम पर हमने देखा.
लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि एफसीआरए बिल के खिलाफ तो देश में कोई खास माहौल बना ही नहीं था। हां, ऑपोजिशन ने कुछ बयानबाजी जरूर की थी, लेकिन वो लोग भी इस मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर नहीं खेल रहे थे। अरे विपक्ष तो इस बात की मांग कर रही थी कि अमित शाह जी संसद में आए, दिल्ली के बीचों बीच इतिहास में पहली बार पैलेट गन्स का जो इस्तेमाल किया गया था स्टूडेंट्स के ऊपर, उसका एक्सप्लेनेशन दे, जिम्मेदारी तय करे। विपक्ष तो यह मांग कर रही थी कि मोदी जी विदेश यात्रा से थोड़ा समय निकालकर संसद की कार्यवाही में भी थोड़ा योगदान दें। अबे एडिटर छोटा बंदर, अबे चैनल बंद करवाएगा तू, म्यूट तो कर देता। एनीवेज, तो भाई कांग्रेस बोलती रह गई, चीखती चिल्लाती रह गई, नारेबाजी करते रह गई। अमित शाह ने पैलेट गन के ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं किया। देश आज भी नहीं जानता है कि यह बाली पहना हुआ फैशनेबल मुंडा दिल्ली पुलिस का है या दिल्ली पुलिस में अब शाखा से गुंडों की भर्ती शुरू हो चुकी है। किसी आम डेमोक्रेसी में ऐसी बातें सरकार को हिलाकर रख देती, यहां चुप्पी से काम चल जाता है और चुप्पी चुप्पी में साइनडाई खत्म भी हो गया, मॉनसून सेशन खत्म, टाटा गुड बाय। तो जब सरकार ने एजुकेशन पर डिबेट ना किया, पुलिस ब्रुटैलिटी पर जवाब ना दिया, तो एफसीआरए जैसा नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड बिल को पीछे क्यों ढकेल दिया, ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? इसका जवाब हमारे पास नहीं है। मेरा मतलब है हमारे आसपास नहीं है, 7 समुंदर पार अमेरिका के पास हो सकता है। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल का जितना विरोध इंडियन लॉ मेकर्स ने नहीं किया, उससे ज्यादा तो यूएस कांग्रेस में हमें दिखा। रिपब्लिकन सेनेटर जेम्स रिश, चेयर ऑफ सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमिटी भी हैं ये भाई साहब, इन्होंने इस अमेंडमेंट को डीपली कंसर्निंग बोला। यूएस कांग्रेसमैन राइली मोर ने इस बिल को क्लियर अटैक अगेंस्ट क्रिश्चियंस बताया और खुलेआम सॉर्ट ऑफ धमकी दे दी कि इंडिया यूएस रिलेशंस में यह एक मुद्दा बन सकता है। याद रखिए, भारत ने अभी भी यूएस के साथ ट्रेड डील को फाइनलाइज नहीं किया है और रशिया से तेल खरीदने के जुर्म में 100% टैरिफ और भी हम पर लग सकता है। हालांकि इस पर हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ क्लैरिफिकेशन दे दिया कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल भारत का अंदरूनी मामला है। ट्रंप सरकार ने भी ऑफिशियली इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है, मौन व्रत ही रखा है। लेकिन फिर भी कुछ ही दिनों के अंदर अंदर चुपचाप मोदी सरकार एफसीआरए बिल को पीछे क्यों ले आती है? याद रखिए, बीजेपी को जो बिल पारित करना होता है वो बिल पारित होता है, बिना डिस्कशन के होता है, ब्रूट फोर्स के साथ होता है। इसी सेशन में ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल, 4 मिनट डिस्कशन। टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल, 3 मिनट का डिस्कशन। बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026, बहुत सिग्निफिकेंट बिल था ये, 5 मिनट इसीलिए इस पर डिस्कशन हुआ। केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026, 4 मिनट टोटल डिस्कशन। सारे के सारे इंपॉर्टेंट बिल सरकार पारित करवा देती है, लेकिन एफसीआरए बिल जेपीसी के रास्ते भेज देती है। सवाल तो बनता है, लाजमी है, कि क्या सच में ये इंटरनल चॉइस थी, ये डेमोक्रेसी थी, सरकार ऑपोजिशन की बात सुन रही थी, क्या ये एक्सटर्नल प्रेशर था? क्योंकि भारत की पॉलिसी शायद अब दिल्ली में नहीं वॉशिंगटन में तय की जा रही है और एफसीआरए का मुद्दा आइसोलेटेड नहीं है। पूरा का पूरा एपिसोड ना बनाते देशभक्त में जब तक ना हमारे पास फैक्ट्स होते। आप देख लीजिए अब क्रोनोलॉजी और Okay, what's the bill's name? FCRA. Let's check out the bill. क्या हो रहा है भाई?
Okay, what is the FCRA bill? Legislative brief. The Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Highlight. The Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 introduces a framework for supervision, management, and disposal of foreign contribution and assets of an organization that ceases to have an FCRA certificate. Okay. An organization may cease to have an FCRA certificate if it is cancelled by the government, surrendered by the organization, or an application for renewal has not been made or is denied. So, if you do not have this FCRA certificate, you cannot basically take foreign contributions. The bill creates a designated authority for vesting, supervision, manage, and disposal of foreign contributions and assets in such cases. In cases of assets that are a place of worship, the authority must ensure that its religious character is maintained. So basically, let's say like you are taking donation for like a mosque or whatever, and you are renovating a mosque, like it should not end up being a temple. Basically, that's what it is saying. The bill reduces the maximum penalty for violation of the act from imprisonment of 5 years to 1 year. Okay. Key issue and analysis. The bill provides the cessation of FCRA certificate will lead to loss of assets. The bill provides that the cessation of an FCRA certificate will lead to loss of assets. So basically, if you are getting foreign contribution and if you suddenly lose a certificate, basically the contribution that you are getting from the foreign entities, the government basically can seize it, basically, right? This implies that the organization that have not renewed their FCRA certificates would see their assets created out of foreign funds renew the FCRA certificates would see their assets created out of foreign funds in the past vested in the designated authority. A related implication would be that an organization cannot exit the FCRA framework without losing its assets created through foreign funds. So basically, अगर आप foreign funds के through कुछ asset बनाए हो, and now you do not want to take any foreign funds and you want to like stop like renewing a certificate, the government can seize your assets basically. To retain such assets, it had to continue renewing its FCRA certificate. Further, FCRA rule adds pending obligation on organization to retain their FCRA certificate. So basically, to take contributions, you cannot basically hoard the money. You have to spend the contribution somewhere basically. I think that's what it's saying. To retain, okay. Further, FCRA rules add spending obligation. So basically, you have to spend some of the money to retain their FCRA certificates. The bill may be treating the assets created by organization with an FCRA certificate differently from those created through prior permission routes. The act or the bill does not provide for an appeal mechanism for cases when central government denies renewal of an FCRA. Damn, bro. So basically, if you are getting foreign assets and the government is like, nah, fuck you, will not give you certificate anymore and seizes all the assets, so you have to basically put your thumb up your ass basically. You can do shit about it. So this is a fucking draconian bill. I don't know. Yeah, this should have a bigger protest against it, I guess. I don't know. Fucking. The organization will also not get an opportunity to be heard before denying the renewal. So basically, if you get denied your bill, denied your FCRA certificate, you would not get a hearing basically. If you got cancelled, basically put a thumb up your ass and be content with it. Part A highlights of the bill. Context. The Foreign Contributions Regulation Act 2010 FCRA regulates the acceptance
and utilization of foreign contribution, that is grants or donation by individual, association or companies. It also aims to prevent any diversion of such contribution towards activities detrimental to national interest. All entities must obtain an FCRA certificate to receive foreign contribution for their activities. As per earlier 1976 Act, which was replaced by the 2010 Act, this certificate validity was not time bound. The 2010 Act introduced a 5-year renewal registration certificate and a prior permission route for one-time recipient. As per Ministry of Home Affairs, 13,520 organizations received rupees 55,741 crores of foreign contribution between 2019 to 2022. The FCRA portal indicates as of July 5th, 2026, there are 14,449 active FCRA certificates, 22,498 cancelled, and 15,212 deemed as expired. Okay. The Foreign Contribution Regulation Bill 2026 was introduced in Lok Sabha on March 25, 2026. It created a designated authority to take over, manage, and dispose assets of an organization whose FCRA registration has been cancelled, surrendered, or seized. A certificate is deemed to be seized when the organization fails to renew it before its 5-year validity period expires. The bill proposes to increase oversight into process relating to the handling of assets upon cancellation, surrender, or cessation of a certificate of registration, the management of defunct organization, and other administrative and compliance processes. Okay. But like the most problematic part of it would be like, if your bill, if your fucking certificate is cancelled, you have to put a thumb up your ass and say yes sir and move on, basically, like that's the like weirdest part of the bill. Like other parts of it is okay-ish. Like I don't feel any problem in the other parts of the bill, but like also you have to keep on like refiling for FCRA if you want to hold the assets that you gain from like fucking foreign contribution. That's also like pretty weird, I guess. Key features: cessation of certificate. The act states that the organization desiring to receive foreign contribution must register with the central government and obtain a certificate. The certificate must be renewed every 5 years. The act provides that the certificate may be cancelled by the central government or surrendered by the organization if it does not wish to receive further receive or use foreign contribution. The certificate may be cancelled if the holder of the certificate has made an incorrect or false statement, any terms and conditions of the certificate or the act are violated, the government feels the cancellation would be in public interest. This is the fucking poison pill. Basically, the government feels that the concept that the cancellation would be in public interest is the fucking weirdest shit ever. And it is the like main reason they are like passing this bill, basically, right? The holder of the certificate has not engaged in any reasonable activity for the benefit of society in his chosen field for 2 consecutive years or has become defunct. The problem, remember, if your certificate gets seized, you would not get an explanation or hearing for that. The bill adds that the registration certificate will cease if it is not renewed before expiry, no application for renewal was made, or the renewal application was denied. So basically, sometimes you can apply for renewal and the government can say like fuck you and take your assets, basically. Vesting of assets created with foreign contribution. As per the act, if the certificate is surrendered or cancelled, the foreign contributions and assets created out of it will vest in such authority as may be prescribed. The bill adds that the cessation of the certificate will also lead to vesting of assets. The bill replaces the vesting provisions from the act with new provisions. It provides designated authority in which foreign contributions and assets will vest, including those assets that are created partly from foreign contribution. Vesting will be provisional till a fresh certificate is granted or the certificate is renewed or restored. Failing this, the vesting will be permanent. If the certificate is renewed, restored, or granted fresh,
The designated authority will return the unutilized portion of the foreign contribution or assets. So basically government will keep it for themselves and be like, हमारे पास safe है, चिंता मत करो. And if your if your certificate bill क्यों बोल रहा हूँ बार बार, if your certificate basically gets cancelled again, so you have to enjoy the thumb up your ass. Yeah, it's so sexy thumb up your ass. Actions taken after assets are vested. The designated authority must use the assets permanently vested in it for public purposes. It may transfer such assets to ministries, departments, or authorities or agencies of central or state government. It may also dispose assets through sale or other processes. Proceeds from disposal along the unutilized foreign contribution will be credited to the Consolidated Fund of India. Basically, it's saying that once your assets will be seized, how the government will use it. Basically, it will either be distributed among the public, or it might be sold by the government, basically through auctions and shit, or it can be added to the Consolidated Fund of India. Basically, whatever that is. For permanently vested assets that are fully or partly a place of worship, the designated authority must entrust its management to such person and in a manner as prescribed. It must also ensure that the religious character of the place and worship is maintained. So basically, if some foreign contribution were used to build, let's say, a religious place or whatever, and their foreign FCRA certificate fails, the government can seize the place of worship, but like they have to somehow maintain the nature of the religious body, basically, right? Conditions for entities with prior permissions. Under the Act, entities that are not registered with the central government with the FCRA certificate must obtain prior permission from the central government before receiving foreign contributions. Prior permission is given for specific purpose for which it is obtained and from a specific source. The Act also states that such prior permissions will be valid for the specific purpose or specific amount of foreign contribution received. The bill adds that such foreign contributions shall be received and utilized within such time period as may be prescribed. So basically, you have to give every details, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या करोगे, and you have to use all the funds within that time period, basically, right? Role of key functionaries. Under the Act, criminal liability for offences committed by a company is borne by its director and other individual responsible for its conduct. The bill defines key functionaries who will be held responsible. The key functions include the directors of a company, partners in a firm, trustee of a trust, the karta of a Hindu undivided family, whatever that means, and an office bearer, member of a governing body, managing committee, or any other controlling authority of a society, trust, trade union, or associations of individuals, and any other person responsible for the management of an organization. A key functionary is presumed liable for the organizational offences unless he can establish that the offence was committed without his knowledge, or that he exercised due diligence. Where an organization ceases to exist or become defunct, the bill places a statutory duty on the last key functionaries to notify the central government. Failing this, the foreign contribution of the organization will be vested permanently in the designated authority. Offences and penalties. As per the Act, contravening its provisions or the rules under it is punishable with imprisonment up to 5 years, a fine, or both. This bill reduces the maximum imprisonment term to 1 year. It adds prior approval of the central government will be required to initiate an investigation for any offence under this Act. So basically, the central government will control every body who is who should be prosecuted, who ought to be prosecuted by this Act, basically. So basically, जो central ruling party के against में है,
You are clapped, dude. You are clapped. Part B, key issues and analysis. Okay, wait. Part B, key issues and analysis. Non-renewal of licenses leading to asset vesting. The Act regulates the use of foreign funds received by certain entities and prohibits its use for activities which may be detrimental to national interest. So basically, if you are doing something that is detrimental to national interest, so you cannot use the foreign funds basically. Such entities may receive foreign fundings only if they are granted a certificate. Such entities, क्या? The Act regulates the use of foreign funds received by certain entities and prohibits its use for. Such entities may receive foreign fundings only if they are granted a certificate. The certificate must be renewed. I read it right. The government may cancel the FCRA certificate if the entity violates any provision of the law or under any specified circumstance. These include violating terms of the condition of the certificate or renewal, not engaging in any reasonable activity in its chosen field for 2 consecutive years, or if the government thinks if it is necessary in the public interest. The Act was amended in 2020 to allow for an entity to also surrender its FCRA certificate if permitted. If an entity's FCRA certificate is cancelled or if it surrenders its certificate, the foreign contributions and assets created out of such contribution will vest with the prescribed authority. The bill adds that an FCRA certificate will be deemed to have ceased. Okay, I have read this. What's the difference? So basically, TLDR is that FCRA is a certificate. It's like a weirdly draconian law that like the government can any moment ban your FCRA certificate and can seize anything that you got from foreign funding and clap your ass basically, and you cannot do shit about it. That's the TLDR. Wait, what? Trump. Okay. खुद ही समझ लीजिए कि कैसे अमेरिका जो कुछ मांगता है, जो कुछ चाहता है, भारत चुपचाप वही कर देता है। एफसीआरए छोड़ो, एथेनॉल की बात ले लो, तेल खरीदने की बात ले लो, ईरान में पोर्ट छोड़ने की बात ले लो, या यूपीआई पर चार्जेस लगाने की बात कर लो। ये सब करने के बाद ट्रंप भारत सरकार और भारत का अपमान करता रहता है और हम चुपचाप बैठकर उसे भी हजम कर लेते हैं। क्या सच में मोदी सरकार को ट्रंप ने अपना पुतला बनाकर छोड़ दिया है? समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्रोनोलॉजी यहां बन रही है, अब इग्नोर करना आसान नहीं है। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वो कानून है जो तय करता है कि कोई भी एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या कोई एसोसिएशन विदेश से पैसा ले सकता है या नहीं। अगर ले सकता है तो कितना ले सकता है, क्यों ले सकता है और कैसे ले सकता है। सिंपल भाषा में, अगर कोई एनजीओ, स्कूल, अस्पताल, चर्च, मंदिर, ट्रस्ट या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन किसी फॉरेन डोनर से फंडिंग लेती है तो उसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से बाकायदा FCRA रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और हर 5 साल उसे रिन्यू करवाना पड़ता है। रिन्यूअल नहीं हुई तो ऑर्गेनाइजेशन लीगली फॉरेन पैसा रिसीव नहीं कर सकता है, और अगर इलीगली फॉरेन पैसा लिया तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। मजे की बात यह है कि अगर कोई संस्था इलीगली फॉरेन फंड्स लेते पकड़ी गई तो चक्के पिसिंग एंड पिसिंग। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फॉरेन फंडिंग का रास्ता खुला हुआ है। बस फॉरेन कंपनी को इंडिया में एक शेल कंपनी बना देनी हो, माने फर्जी कंपनी बना देनी होती है और सारा का सारा पैसा लोकल माना जाता है। वाना मास्टर स्ट्रोक। एज अ कॉन्सेप्ट फॉरेन फंडिंग हमारे देश में 1976 से ही ट्रैक और कंट्रोल किया जाता है। अब FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 इसी एग्जिस्टिंग फॉरेन फंडिंग आर्किटेक्चर में कुछ मेजर बदलाव करना चाहती थी। जैसे कि एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करेगी। उसके बाद क्या होगा,
बताने की जरूरत नहीं है। इससे भी दिलचस्प बात, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या वो सरेंडर कर देता है या रिन्यूअल से मना कर देती है सरकार किसी भी वजह से, तो सरकार के पास ये लीगल अथॉरिटी हो जाएगी कि उस संस्था की जो फॉरेन फंडेड एसेट्स हैं, माने कोई स्कूल खड़ा है, अस्पताल खड़ा है या कोई जमीन है उनके पास, इसका कंट्रोल सरकार के पास आ जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन टाइम रहते फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाती है किसी की वजह से भी, तो ये सारे एसेट्स परमानेंटली सरकार के पास चली जाती हैं और सरकार उसे किसी भी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर सकती है या बेच भी सकती है। हिंदी में बोले तो बेसिकली कोई एनजीओ, कोई संस्था ज्यादा दिक्कत करने लगे तो लाइसेंस कैंसिल, और इससे पहले कि कोर्ट कचेरी हो, साल 2 साल निकल जाए, अपील्स लगे, सारा का सारा एसेट, सारा का सारा बिल्डिंग, जमीन, उसको नीलाम कर दो। हुआ ना बुलडोजर पावर। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इशू है इस बिल का सेक्शन 16B, जो नए फ्रेमवर्क को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करता है। मतलब जो एसेट्स पहले से ही पुराने कानून के सेक्शन 15 के थ्रू वेस्टेड हो चुकी हैं, उन्हें भी नए रेजीम के अंदर लाया जा सकता है। केरला की क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस जो दशकों से स्कूल और अस्पताल चलाते आए हैं, फंडिंग इनकी फॉरेन डोनेशन से आती हैं, वो इस बात से बहुत ज्यादा ही घबराए और परेशान हैं, क्योंकि अगर उनका रजिस्ट्रेशन कभी भी लैप्स हो जाता है तो ये पुरानी एसेट्स भी अब सरकारी टेकओवर के दायरे में आ जाती है। अब ये तो वही बात हो गई कि किसी नेता ने अच्छा काम करना बंद कर दिया तो उसकी पूरी संपत्ति जनता के नाम कर दी जाएगी। मजाक कर रहा हूं, ऐसा कभी होगा थोड़ा ही ना। अरे नेता ने अच्छा काम किया कब, जो काम करना बंद कर देगा, है हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। लेकिन फॉरेन फंडिंग लेने वाले संस्थानों के लिए दिक्कतें यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि नए कानून के तहत सरकार सिर्फ एसेट्स फ्रीज नहीं करेगी, अगर उसे लगा कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यह जरूरी है तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज को खुद मैनेज करने के लिए उसको लीगल कवर मिल जाता है। अब पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब मान लो सरकार की मर्जी जहां हुई वही पब्लिक इंटरेस्ट हो जाएगा। और इससे पहले कि आप सोचो कि अरे देशभक्त इतनी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना रहा है, क्योंकि कानून तो अभी लागू भी नहीं हुआ है, तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि सरकार के अपने डेटा के मुताबिक 15 जुलाई 2026 तक 14,449 एफसीआरए रजिस्ट्रेशंस एक्टिव हैं, जबकि 22,498 कैंसिल हो चुकी हैं, 15,212 एक्सपायर हो चुकी हैं। यानी लाखों करोड़ों का एसेट्स इस नए एक्सपायरी फ्रेमवर्क में आने के लिए तैयार है। माने थाली तैयार है, बस अब खाना बाकी है। कानून जैसे ही हो जाएगा सरकार आराम से इस सबको गबन कर सकती है। अब देखिए, सरकारें हमेशा से ही एफसीआरए को टाइटली कंट्रोल करती आई हैं, लेकिन अब तो बात फिरौती तक आ चुकी है। इसीलिए 8 साल पहले जब हमने देशभक्त की शुरुआत की थी तो हमने जीरो एफसीआरए, जीरो फंडिंग, जीरो डोनेशन का एक फिलॉसफी अपनाया था। आइडिया यह था कि कभी भी फंडिंग को लेकर ब्लैकमेल नहीं होना है, सरकार के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमारे लिए गर्व की बात यह है कि फॉरेन फंडिंग तो छोड़ो, आज तक के डेट में 1 पैसा डोमेस्टिक फंडिंग से हमने नहीं उठाया है, ग्रांट से नहीं उठाया है। नतीजा यह हुआ है कि हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, छोटा ही टीम रह गया है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा तो देशभक्त टीम और अच्छा कर सकता है और एक्सपैंड कर सकता है। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर हमें सपोर्ट करिए ऑन patreon.com/theDeshbhakt या ज्वाइन बटन दबाइए ऑन YouTube। साथ ही आप अनलॉक कर पाएंगे मेंबर्स ओनली कंटेंट एंड प्रायोरिटी एक्सेस। जैसे कि मैंने बताया, एफसीआरए का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। यह कानून 1976 में लाया गया था। इमरजेंसी के दौर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को शक था कि विदेशी ताकतें देश के अलग अलग संस्थानों में पैसा डालकर Why the fuck like this? All authoritarian leaders like fear about foreign funding. Damn, bro. Like I might simp for Indira Gandhi a little bit too much. But believe me or not, like a lot of fucking weird laws that we have right now that BJP is like misusing and also bringing like more draconian versions of it, like have been like vested by or have been like started by Indira Gandhi basically. Talk about the like gun import ban law, or talk about the like weird regulation of freedom of speech law, or talk about this foreign funding law. Like there's a law, even I think like was UAP under Indira Gandhi, or it was also under some like Congress leader rule, by the way. It was not like
it was UAPO was not really brought by BJP. BJP like misused it and overused it way too much, but damn, it was brought by some Congress leader, by the way. A lot of fucked and of weird ideas have been implemented in Indian system through Indira Gandhi, and that should be like a black spot in her regime, by the way. भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बाहर से आने वाले पैसे को रेगुलेट किए जाना था, इंपॉर्टेंट था। राजीव गांधी के टाइम में इसे और सख्त बनाया गया। 1984 में एनजीओस के लिए रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर दिया गया। 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने पूरी तरीके से एफसीआरए कानून को बदला। 5 ईयर रिन्यूअल साइकिल लाया गया और भी ज्यादा सख्त मॉनिटरिंग कर दी गई। फिर 2016, 2018, 2020 में अमेंडमेंट्स भी लाए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की लिमिट 50% से घटाकर 20% कर दी गई, मिसयूज को रोकने के लिए। सब ग्रांटिंग को बंद कर दिया गया। सारे फॉरेन फंड्स एक ही डेजिग्नेटेड एसबीआई अकाउंट में आने लगे। यानी ये पैटर्न पुराना है। हर सरकार एफसीआरए के थ्रू फॉरेन फंड्स को कंट्रोल करती आई है, लेकिन अब तो बात आ गई है कि सरकार रेट्रोस्पेक्टिवली एसेट्स को कंट्रोल करना चाहती है, जो फिरौती से कम नहीं है। मोदी सरकार का इस सब का डिफेंस ये है कि ये सब ट्रांसपेरेंसी के लिए किया जा रहा है। मिनिस्टर नित्यानंद राय ने कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के साथ काम कर रही है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस के एमपी केसी वेणुगोपाल इस बात पर सवाल उठाते हैं कि एक तरफ आरएसएस को फॉरेन डोनेशंस मिलने की पूरी आजादी है, दूसरी तरफ माइनॉरिटीज और एनजीओस को टारगेट किया जा रहा है। और यह तर्क गलत नहीं है। आरएसएस एक अनरजिस्टर्ड वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसे आर्टिकल 19(1)(c and even like you saw the weird like although that doesn't really matter that much actually, like did you see the weird thing that सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल के छोड़ के ये लॉ किसी पे अप्लाई नहीं होगा, लाइक देयर वाज अ वियर्ड प्रोविजन लाइक दैट। The bill reduces the maximum imprisonment term to 1 year. It adds the prior approval of the central government will be required to initiate an investigation for any offences under the act. So if you commit any offence, it requires explicit permission from the central government to like start an investigation. So if you are from RSS, you are safe. Regardless of what you do, you are safe, okay? You're safe, buddy. के तहत एसोसिएशन बनाने का फंडामेंटल राइट है, बिना किसी सोसाइटी या ट्रस्ट के अंडर तहत माने रजिस्टर किए हुए। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड ही नहीं होगा उस पर एफसीआरए का कोई रजिस्ट्रेशन बेस्ड प्रोविजन प्रावधान लगता ही नहीं है। बिल चाहे कितना भी सख्त कानून हो, आरएसएस पर नहीं लगेगा। और यह कोई एक्सीडेंट नहीं है। 2016 और 2018 के फाइनेंस बिल में भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी फॉरेन फंडिंग एक्सेप्ट करना आसान बना दिया गया था। वही एफसीआरए जिस पर अगर एनजीओज निर्भर करे, जो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करे, या अस्पताल निर्भर करे, उसे सख्ती से लागू किया जाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। যিনি নিজেকে নীল রায়বর্মন বলে পরিচয় দিচ্ছেন তাকে ডাকতে চাই। সেদিন ওই মেমোরি গেম খেলাটায় उधर आरएसएस टेक्निकली एफसीआरए से बाहर इसलिए है क्योंकि उसने कभी खुद को रजिस्टर ही नहीं किया है, जबकि केरला के फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन स्कूल्स हो, अस्पताल हो, देश के बाकी एनजीओज, वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो दशकों पहले उन्होंने रजिस्टर किया था अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए, फॉरेन डोनेशंस लीगली रिसीव करने के लिए। अब वही डिसीजन, वही ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए उन पर महंगा पड़ रहा है, उनके खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी सिर्फ उन्हीं एसेट्स पर कंट्रोल कर सकती है जो कभी रजिस्टर्ड हुई हो। जो कभी रजिस्टर्ड ही ना हुआ हो उसके पास और उससे कंट्रोल लेने का सवाल ही नहीं उठता है। तो सवाल सिर्फ आरएसएस को फॉरेन फंडिंग मिलती है या नहीं की बात नहीं है। सवाल यह भी है, जब पूरे देश में ट्रांसपेरेंसी का स्ट्रक्चर ही एसिमेट्रिक हो, तब यह ट्रांसपेरेंसी का झुनझुना बजाना, यह दावा करना बहुत ही खोखला, हिपोक्रेसी भरा है।
एफसीआरए अमेंडमेंट में दिक्कतें हैं, इस बात पर कोई डिबेट नहीं है। जैसा कि उनका रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन, वो सेक्शन 16B, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कानून आज बन रहा है लेकिन लागू सालों पहले के केसेस में भी हो जाएगा। यानी जो चीज उस वक्त लीगल थी उसे बाद में इलीगल भी माना जा सकता है, पनिशमेंट भी मिल सकती है। ऐसे कानून किसी भी देश की क्रेडिबिलिटी को बहुत गहरा ठेस पहुंचाते हैं। निवेशक को पता ही नहीं होता है कि कल भैया उनकी जो फैक्ट्री आज लीगल है वो कल इलीगल हो जाएगी। याद है ना हमने वोडाफोन के साथ क्या किया था यूपीए सरकार के टाइम पर, वही काम हम फिर कर रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि बीजेपी इस बिल को पारित करना चाहती थी और अमेरिका के विरोध के होते हुए शायद पीछे हट गई। और एफसीआरए अकेला केस नहीं है जहां भारत सरकार ने अचानक अपना स्टैंड बदला हो। ठीक उस वक्त जब अमेरिका ने उसी चीज की मांग की हो, हम वैसा ही करने लगते हैं। यूपीआई और रुपे पर ट्रांजैक्शन फी लगाने की बात कहां से आ गई? अरे सालों से हम इसे बोलते आए हैं, ऑलवेज फ्री, ऑलवेज विल रिमेन फ्री। बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये दिखा चुके हैं कि यूपीआई को फ्री रखना सरकार के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ऐसा कोई गगनचुंबी कॉस्टिंग नहीं है यूपीआई का। फिर हमने ऐसा क्यों किया? यह रिकॉर्डेड फैक्ट है कि ट्रंप सरकार सालों से भारत से कहता आया है कि भारत अपनी पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई को वीजा, मास्टर कार्ड जैसे अमेरिकन कंपनीज के अगेंस्ट अनफेवरेबल एडवांटेज और फेवर देती है। और मजे की बात देखिए, ठीक उसी समय जैसे ट्रेड डील फाइनलाइज होना है, भारत सरकार टैरिफ से बचने की कोशिश कर रहा है, तभी भारत सरकार अपना कानून बदल देता है इन पेमेंट सिस्टम्स के लिए। निर्मला ताई जनता के सामने आकर कहती है चिंता की कोई बात नहीं है। अरे मर्चेंट्स पर यह चार्ज लगाया जाएगा, ग्राहकों के लिए यह चार्ज नहीं है। हां, जैसे बड़े बड़े कंपनीज अपना पेट चीर कर यह चार्ज अपने पॉकेट से देने वाली हैं, जनता से बचाने वाली हैं। इससे पहले भी हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल पर इंपोर्ट ड्यूटी ट्रंप के बार बार डिमांड करने के बाद हमने कम कर दी। बर्बन विस्की पर टैरिफ 150% से सीधा 100% पर ले आए, वो भी ट्रंप के अनफेयर लीवीज के कंप्लेंट के तुरंत बाद। अच्छा, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। रशियन ऑयल के मामले में देखो, भारत का स्टैंड यूएस के प्रेशर के हिसाब से बदलता रहता है। पहले हमें टेम्पररी वेवर मिलता है, हम खूब सारा तेल खरीदते हैं, फिर अमेरिका कहता है तेल खरीदना बंद कर दो तो हम बंद कर देते हैं। India's current foreign policy is like a shit show actually, and well, for this I actually have to like make up my mind and like make some notes and like, because if I say something like a random and I don't know actually how to like explain what's in my mind. So TLDR is like, India don't really have a like foreign policy anymore at all right now. Current leadership of our country do not really understand diplomacy at all, like especially that is because of the type of like domestic rule that they do. They have to maintain like a strong man, like everybody respects us type of like persona, but when that doesn't happen in reality, it kind of like weirdly like breaks the bubble of people basically, and many people basically feel weird about it, and it's a shit show basically. It can be a whole ass news stream जहाँ पर हम इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे. It's a goddamn shit show. With China, it's a shit show. With Pakistan, it's a shit show. With America, it's fucking oh god, it's a shit shower. Okay, not it's a shit tsunami. अब अमेरिका की सेनेट 100% टैरिफ थ्रेट पास कर रही है कि भैया भारत जैसे देशों पर लगाओ टैरिफ. इन्होंने रशिया से तेल खरीदा है. हम दंग बैठे रह गए हैं. और अब ट्रंप और मोदी के बीच में चीजें रिजॉल्व होने की उम्मीद बताई जा रही है. मतलब भारत अपनी एनर्जी पॉलिसी वॉशिंगटन के हिसाब से चलाने वाली है. ट्रेड डील में भारत ने $500 बिलियन का अमेरिकन गुड्स कमिटमेंट दिया. भैया कहां से खरीदोगे इतना सामान, जिसके बारे में फाइनेंशियल टाइम्स तक ने लिखा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत ने ऐसी वन साइडेड एक तरफा डील पर हस्ताक्षर क्यों किए हैं. एथेनॉल के मामले में भी जब रिपोर्ट्स आई कि भारत यूएस से बड़ी मात्रा में एथेनॉल इंपोर्ट करने वाला है, तो सरकार ने पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया कि कोई कमिटमेंट हमने नहीं दिया है.
लेकिन जैसा कि देश में शुगर शॉर्टेज बढ़ने वाला है, तो हम किस देश से ये सारी चीजें इंपोर्ट कराएंगे बताइए जरा। और एग्रीकल्चर का तो पूरा चैप्टर खुलना भी बाकी है। इंटरिम ट्रेड डील के थ्रू भारत ने डिस्टिलर्स, ड्राइड ग्रेन्स, रेड सोरगम, ट्री नट, सोयाबीन ऑयल, वाइन, स्पिरिट्स, इस पर ड्यूटी कम या खत्म कर दी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल खुद कह चुके हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ 50% से 18% तक इसी डील के बदले मिला हमें। भारत फिलहाल अमेरिका को इस बात पर रेजिस्ट कर रहा है कि डेयरी, जीएम क्रॉप, मीट, पोल्ट्री पर ड्यूटी कंसेशन नहीं दिए जाए। ट्रंप इन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को खोलने पर आमादा बैठा हुआ है, लेकिन शायद किसानों के आक्रोश और प्रोटेस्ट से उसको सोचकर मोदी सरकार ने इसे चेक में रखा है। नहीं तो अगर यह फाटक खोल दिया तो हो गया बट्टाधार हमारे देश का। अमेरिकन प्रोडक्ट्स विल फ्लड इनटू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। चाहे कोई मोदी सरकार का आलोचक हो या प्रशंसक, इस बात में कोई खास डिबेट नहीं है कि अमेरिका को खुश रखने के लिए हमने सब कुछ किया है। अरे ट्रंप ने अपनी इनॉग्रेशन में मोदी जी को बुलाया तक नहीं, लेकिन दोस्ती बनी रही। फिर भी अमेरिका कोई मौका नहीं छोड़ता है हमें जलील करने में, और हमारा जवाब सन्नाटा। Damn. All right, baby, let me tell you exactly what you're going to get inside singing from scratch right now for just $27. हॉर्मुज के पास इंडियन सेलर्स पर यूएस नेवी फायरिंग करती है। इतिहास में याद रखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस ने हमारे सेलर्स को, इंडियन सेलर्स को, सिटीजन्स को मौत के घाट उतारा, लेकिन कोई रिग्रेट, कोई अपॉलॉजी नहीं। भारत की तरफ से भी कोई स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट नहीं हुआ। उल्टा अमेरिका हम पर हावी होकर बोलता है अपने सेलर्स यहां से बाहर निकालो, काबू में रखो उनको। ट्रंप बार बार ऑपरेशन सिंदूर में मीडिएशन का क्रेडिट लेता आया है। नई दिल्ली बोलता रहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, ये हमारा बायलैटरल मामला है, लेकिन ट्रंप 56 बार उसी बात को दोहराते आया है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तो और ज्यादा घमासान हो जाता, बीच में मैं आके बचा दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जिनका एंटी इंडिया रुख वेल डॉक्यूमेंटेड है, उनके साथ ट्रंप की दोस्ती खुलेआम दुनिया देख रही है। इतना ही नहीं, ट्रंप को भारत का अपमान करने में लगता है मजा आता है। कभी डेड इकोनॉमी बोल दिया, कभी ऑब्नॉक्शियस टैरिफ बोल दिया। एक अमेरिकन कंजर्वेटिव का इंडिया इज अ हेल होल कमेंट को ट्रंप खुद अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इन सब पर भारत का जवाब स्टडीड साइलेंस रहा है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि मोदी को उनको खुश रखना होगा। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ऐसी भाषा का प्रयोग अपने सबसे बड़े राइवल और हमारे नेबर चाइना, उसके खिलाफ कभी नहीं करता है। एक शब्द नहीं बोलता है चाइना के खिलाफ। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी अमेरिका ने एक 7 साल पुराने वेवर को रिवोक करके भारत के चाबार पोर्ट ऑपरेशंस के लिए जरूरी सैंक्शन एग्जेम्पशन को भी खत्म कर दिया, जबकि भारत वहां एक 10 साल का लीज अग्रीमेंट साइन कर चुका था अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए, अपना स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बनाने के लिए चाबार पोर्ट पर। H1B, L1 वीजा पर नए फीस थोप दिए गए हमारे प्रोफेशनल्स पर। उनकी जिंदगी बदतर बन चुकी है, लेकिन कोई रिटेलिएशन नहीं, कोई निंदा नहीं। इतना ही नहीं, जब अमेरिका से इलीगल इंडियंस को डिपोर्ट किया गया, अच्छी बात है, डिपोर्ट करिए, बेड़ियों में बांधकर क्रिमिनल्स के तरह उनके साथ बर्ताव किया गया, सोशल मीडिया पर वीडियो रिलीज किया गया, हमारे देश का अपमान हुआ, लेकिन एकदम चुप्पी रखी मोदी सरकार ने। ट्रंप ने भारत जैसे दूसरे देशों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, यह बात भी सच है, लेकिन करारा जवाब भी मिला। ब्राजील ने सीधा टैरिफ्स के अगेंस्ट रिटेलिएटरी मेजर्स की बात कर डाली। प्रेसिडेंट लूला ने खुलेआम ट्रंप के प्रेशर टैक्टिक्स को अनएक्सेप्टेबल बताया। मेक्सिको ने लगाए गए टैरिफ्स पर खुलेआम पुशबैक किया और निगोशिएशंस में अपनी शर्तें रखी। स्पेन ने नेटो स्पेंडिंग पर ट्रंप के प्रेशर को पब्लिक प्लेटफॉर्म में रिजेक्ट कर दिया, अपने डिफेंस बजट पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। ये सब यूएस के एलाइज हैं और चाइना और इंडिया जैसे बड़े इकोनॉमीज भी नहीं हैं, फिर भी उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया, अपने आत्मसम्मान को बेचा नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। भारत ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। न टैरिफ्स पर हम बोले, न अपमान होने पर बोले, न सेलर्स की मौत पर बोले। क्यों? क्योंकि जवाब एक्चुअली सीधा है, भारत के पास कार्ड्स नहीं है। वी हैव नो कार्ड्स एज ट्रंप सेज। ना तो मिलिट्री ब्लॉक का हम कोई हिस्सा है, ना कोई इकोनॉमिक लीवरेज है हमारे पास, ना प्रेशियस मटेरियल्स है, ना ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिसे अमेरिका को डर लगे, और ना हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है कि हम मुंह उठाकर और कहीं चले जाएं। अमेरिका और चाइना के चीजें इंपोर्ट करते ही उसके बीच में हम पिस रहे हैं। इसीलिए निगोशिएट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव पॉलिसी नहीं है।
तो इन सारी चीजों को अगर जोड़कर देखा जाए, क्रोनोलॉजी बनाया जाए, तो एफसीआरए का अचानक जेपीसी में जाना, यूएस कांग्रेसमैन का डायरेक्ट धमकी देना, यूपीआई पर चार्जेस लगना, चाबार पोर्ट को छोड़ देना और फिर इंसल्ट पर इंसल्ट, उस पर चुप्पी साध देना, एक तस्वीर बताती है मोदी सरकार के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अमेरिका को गुस्सा कर नहीं सकते, इसलिए जी हजूरी में हम लगे पड़े हुए हैं। ये सब बातें भी हम गटक लेते, एक्सेप्ट कर लेते, हाँ भैया जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही ऐसा बन गया है। लेकिन घर पे आप लोगों को क्या बता रहे हो? घर पे आप बता रहे हो हम विश्वगुरु बन चुके हैं, अरे दुनिया भर में लोग हमारे सामने झुककर हमको नमन करते हैं। जबकि सच तो यह है कि हम अमेरिका के पालतू बनकर रह गए हैं और सरकार बस लंबी लंबी डींगे हाकी जा रही है। Well, the US was in the United States. Wait, what? Wait. আমরা কি একটা perfect और लौंडे क्या हाल चाल दोस्त? This is Sweta, by the way. Damn, he looked so different. Damn. देखो यार, मेरे को ऐसे वीडियोस बनाने का कोई शौक वक्त नहीं है, मेरे को भी नहीं। बट जब ये मैंने चीज़ पढ़ी, ऑब्वियसली टाइटल देख के आपको समझ में आ गया मैं कपिल शर्मा की बात कर रहा हूँ। जब मैंने होल स्टोरी पढ़ी, अभी ऑब्वियसली ऑडियो रिकॉर्डिंग उसकी वायरल हो रखी है, ये हो रखा है, वो रखा है, मतलब एक्चुअली में 6 7 7 8 9 दिन हो गए, बट इससे पता है बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं। ओके। और मैंने कहा यार नहीं, मेरे को आपसे शेयर करनी है, बताओ। ये ऑब्जर्वेशंस मुझे आपके साथ शेयर करनी है क्योंकि बहुत ज़रूरी है यार, बताई दो। इस दुनिया में, क्योंकि हम जिस डे एंड एज, जिस जनरेशन और जो हमारा आजकल का हाव भाव है हमारी जनरेशन का, जो हमारी वांट्स हमारी डिजायर्स हैं, उससे बहुत स्टोरी बहुत रेजोनेट करती है और आप बहुत कुछ सीख सकते हो इससे। पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो उससे मुझे समझ में आई कि हम सब आज की जनरेशन में फेमस होना चाहते हैं। Sure. किसी ना किसी हद तक हमें पॉपुलैरिटी हम सीख कर रहे हैं, हमें लाइक्स चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोइंग चाहिए, हम फॉलोइंग के भूखे हैं। हमारी जनरेशन, ये जो करंट जनरेशन है ना, इसमें पॉपुलैरिटी फेम जो वर्ड है ना, हम काइंड ऑफ उसको ऑब्लिटरेट कर रहे हैं, हमारी जनरेशन कर रही है। क्योंकि आज की जनरेशन में देखो एक चीज सोचो। Wait, what was the context of it? What is he talking about? Phone call? Okay. My let's कुछ देर मेडिटेशन म्यूजिक सुन लेते हैं, ठीक है? उसके बाद I'll be back. नॉन कॉपीराइट वाला लेते हैं भाई, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा।
Okay. I'm back. I'm back, bros. Broski, I'm back. Okay. Okay. Wait. Okay. 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 Sorry. So what am I doing?
I am making, I'm completing the CJP timeline, and okay. So what I'm doing is I'm trying to complete the CJP timeline and generally try to like gauge where did the energy that brought so many people to the streets of Delhi went. What were the aftermaths? What were the retributions by the state? And what were our pushbacks against it? And what are the observations that me as a person made uh, of the protest that we had in India? I don't remember the exact quote. What was the exact quote? Yeah, so that becomes activist and art becomes human rights and RTA activists. Uh, okay. 15th May 2026, CJ Suryakant referred to the unemployed youth that becomes human rights and RTI activists and dissenters on social media as cockroaches and parasites to the society. Basically, this kind of like enraged the youth who have been silenced for way too long, and any dissent towards the government had been labeled as anti-national and anti uh, societal or something bad that ought to be hated upon. The youth was frustrated, and that frustration came out on social media basically.
Wait. I don't remember. Did he create in 16th? Fuck. Damn. June, July. Okay. Okay, wait. When was the handles of so basically after the comments a MEA named Abhijit Dipke sorry. Okay. Sorry, I misspoke there. So then on the same date, I think Avijit Dipke made a tweet that what if the all the cockroaches of India came together and made a political party, and on as the Twitter, was it on Twitter or Instagram? I don't remember. As that started gaining like a fuck ton of popularity,
as that got started getting a popular, like a fuck ton of popularity and attraction, 2026 official handles on social media platforms, I think Twitter and Instagram, were made. May 2026, the original X handle was withheld in India, leading to a backup and alternative accounts being set up shortly after. Okay, sorry, social media platforms and the website. May 21st May 2026, the official Twitter handle was withheld is that the spelling? Double H, okay. Withheld and backup accounts were made accordingly. Okay. You might feel that this is a over topic. Why am I doing this? Just wait for a bit. Let me complete this. You will understand what I'm talking about. Okay. Damn, did I actually stream for 5 fucking hours? God damn it, that's why I'm having this bad of a leg ache. Okay. 15th में okay 21st में तो इसके बाद से लगभग जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट का टाइमलाइन है इसके साथ मैच हो जाता है आई थिंक राइट ओके
3rd May 2026, the National Eligibility NEET, basically National Eligibility Entrance Test NEET UG 2026 was conducted across India. The NTA, with the approval of the Government of India, cancelled the NEET UG 2026 examination following the allegation of a question paper leak and referred to the matter to the Central Bureau of Investigation, that is CBI, for investigation. Okay. June 1st, 2026, members of ISA and KYS protested outside the Ministry of Education in New Delhi against the NEET paper leak, irregularities in CBSE Class 12 examination and CUET, and demanded accountability from the government. So basically, this was new to me till right now, that it was actually a ISA protest that CJP basically joined and boosted it the fuck out, basically, right? Bro, I'm having a bad cramp in my knee. Well, to be fair, I don't think this part was important in the actually in the story of the CJP per se, because you will understand the story at least that I'm trying to write. I don't think this is relevant. Although this is the protest they chose to invest in, and this is the protest that a lot of people resonated with at the end of the day. But no, fuck it. I'll add it, okay? No, it doesn't really make sense because it was not really a CJP protest till then, no? It was a Aisha protest. Yeah. So, yeah, 6th June. So 6th June के पहले basically Abhijit Dipke announces that he will be joining the protest with the students, basically trying to do a mass demonstration with the frustrated people that had came together with the sole frustration that their voices were never heard. Okay, so there's a lot of things that actually happened between 21st May, actually 16th May to 6th June. Okay, let's talk about it. Okay, 16th May, satirically, basically he made a social media post, and within 3 days it broke all fucking records and stuff like that. It got 20-ish million followers within 3 days or something like that. Or something crazy like that, okay? And
he tried to connect with people all around that he knew and that he thought that would be useful to the movement. Some of their names was Saurav Das, some of them were Meghnerd, and also there were other names that was included in the org. There were also some like weird like internal beefs and shit among people, especially this Meghnerd person. I not to shit talk him, especially because he came back and joined when he saw that it was relevant enough. But like his disparaging comments at the beginning that no, CJP is not gonna go anywhere, or no, it's just a social media and satirical party or whatever, right? I don't know, it felt weird, to be very honest, okay? There were also allegations that, oh my god, you were talking about reserving 50% seats for women, but you don't really have a strong women face in your leadership or whatever. Well, that's a different topic. We can talk about it another day. But like that was a weird snarky like thing that I did not really appreciate. Should we react to that interview? We can. We can react to that interview, but not right now. Was this the one? Yeah, this is the one. This is the one. Okay, we can hear it later. It's not necessary to hear it right now. Then basically people started goating him into the idea that, oh, you made a satirical page or whatever, will you make a political party, will you join in protest, will you demonstrate against the government, will you be our voice? And after a few while, people actually found the messiah, which I think is a big problem of our political system. But end of the day, people found a messiah they relate with. People found a person they actually can feel that he's like them. And that's why so many people basically flock to his social media page. And a lot of spoof accounts were created trying to highlight their own local issues and stuff like that. There were many statewide accounts that were created. There were many even district-wise accounts that were created. There's a fuck ton of accounts that were created trying to raise awareness about different issues. Also, some of them, to be honest, were trying to just gain followers by demonstrating their depression against the government. The same reason, like a lot of pro-government people are this highly active on social media. They, end of the day, try to gain followers. Sometimes it's just, like it's just about the clout and the money, right? I think we should complete the list first, then we can talk about then we can like in details go like one by one, right? 5 घंटा हो गया, इसलिए I'm having a big body pain in my body. So I'm gonna copy this from wiki basically. 7th to
19th June 2026. There were I think 20th June, Sonam Wangchuk. No. Demonstrator regrouped at Jantar Mantar for extended mobilization. Okay. Sonam Wangchuk, I think, joined in 28th, I think, right? Okay. Demonstrators regrouped at Jantar Mantar for extended mobilization. क्या हो रहा है भाई? मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है. डैम.
Okay. So basically 28th June, Sonam Wangchuk joins the students and the CJP members demanding the resignation of Dharmendra Pradhan. What was the slogan? Pradhan go back campaign apparently. Damn. Should we like play a music in the background or some shit like that? Damn, like it's like a little bit. Wait. Oh damn. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Kitna der se I'm just streaming and I'm just not sharing the screen. Wait. Oh shit. इधर 3 दबा दिए हम. Fuck. Wait. Damn. Okay. Never mind, okay? I'm a retarded fuck. I'm a retarded fuck, okay? Never mind. Oh shit. इधर 3 दबा दिए हम. Fuck. Five minutes is what it takes to
Okay. From next time, I cannot use like this side of the key. I have to use like this side of the like letters. Sorry, numbers basically. Especially for 3, 2, 9 and stuff like that. I also typed 9. God bless me that I didn't like fucking stop the streaming. Damn. Okay, so for you guys to catch up, I'm basically copying from the wiki to my notepad basically. Why am I doing this? Once I make the list of the events that happened of the timeline, we'll go from day by day of different things that we want to talk about, or I personally want to talk about. And we can talk about different interviews that happened, or different dynamics that played along within different days of the protest, come different during the upliftment of the party or whatever, right? Like we can talk about different things like this. CJP started getting support from the opposition parties and general widespread support. A general widespread support from the there's a lot of things that's not mentioned here actually. We can make like sub points and talk about that or some shit like that. I don't know. Okay. Wait 1 second.
Oh shit! I'm okay. So ये वाला I'm just gonna like fucking copy and paste from wiki basically, okay? Okay. I don't know how to like okay. Okay, let me give me like one more day, okay?
आज का स्ट्रीम में अच्छा कंटेंट तो निकल ही जाएगा, because I streamed for like a fuck ton of time. Also I took like a fuck ton of break today, and yeah, so मैच के लिए चलता हूँ. मिलते हैं I hope कल को, because I don't know, I might not be able to come back today anymore because I'm cooked. Okay, I am cooked. So bye for today. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. मिलते हैं कल को, परसों, या whatever, whenever I can, I will come back, or maybe not if I die. So मैं आज चाहता हूँ bye for today. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कल को, राइट? कल को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे में हम ज़रूर मिलते हैं. 15 तारीख को एक मेगा इंडिपेंडेंस डे स्ट्रीम करेंगे फ्रॉम लाइक मॉर्निंग 4 o'clock से लेके आई कैन डू इट टिल लाइक 12 o'clock in the noon or something like that. Okay, yes boys, let's go. Bye 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 bye.